So, hi computer guys, we are here for Canadian administrative law. So, before I'm gonna teach you, certain steps are very important. First 10 minutes are very important, other than administrative law. First of all, Nidhi, I need your eye contact. Please do not write. I need your eye contact. So we are here for NCA, right? So most likely, whenever you're gonna apply for NCA, so NCA gonna give you six subjects: constitutional law, administrative law, criminal law, professional responsibility, and foundation law. In addition to five subject, one extra is LRW, right? LRW, six subjects minimum. Minimum or maximum can be seven, sometime can be eight. If you're gonna apply for NCA today, so within 3 months, they're gonna give you answer within 3 months after the last document. It gonna takes time. How many month? Three Three month. months. 3 month. They're gonna take time. 3 month, right? 3 month. Okay. Now we have five basic subjects: constitution law, administrative law, criminal law, PR, foundation. Five subjects. To clear five subjects, approximately you need to spend 100 hours per subject. 100 hour per subject. 100 hour per subject. So 100 hours divided into three parts. One 25 hours. I'm gonna give you teaching 25 hours. 25 hours for criminal law, constitutional law, administrative law, PR and foundation Rahul gonna teach. So 25 hours to understand any subjects, 25 hours I'm gonna give you teaching 25 hours, and 25 hours you have to revise whatever I'm gonna teach. Is that clear, Nidhi? Yes. To clear any exam, to clear any NCA exam, you have to spend 100 hours, 100 hours divided into three part. One part is 5 hours. I'm gonna teach you. Whole subject is done. So next 25 hours, you have to revise whatever I'm gonna teach you. Make sense? Yeah. So 25 hours, I'm gonna teach you. 25 hours, you have to revise whatever I'm gonna teach. 50 hours. If you're gonna rely only on 50 hours, if you're gonna rely only on 50 hours to clear the exam, 50% chances. To clear the exam, 50% chances. Only 25 hours, I'm gonna teach. 25 hours, you have to revise. Only 50 hours, if you're gonna rely only on 50 hours, so 50% chances you're gonna pass, 50% chances you're gonna fail. Okay. If you're gonna spend 50 hours extra, what is extra? Research. For example, we're gonna read the syllabus. For example, administrative law. There are Wavilo case. This is a Wavilo case, Baker case, Dunsmuir. Dunsmuir was old case. Baker, Wavilo, Dunsmuir, Singh, Khan, couple of cases prescribed by NCA syllabus. So I will teach how to read. What was a benefit if you're gonna rely next 50 hours, if you're gonna spend 100 hours, highly chances you're gonna pass the exam. Highly chances you're gonna pass the exam. Highly chances mean 80% chances. If you're gonna rely on 100 hours, 80% chances you're gonna pass. Is that clear, Nidhi? Okay. Yeah. So if you're gonna rely only on 50%, okay, then next 50 hours, very, very, very important. Why very, very, very important? Next 50 hours is important because next 50 hours you have to understand. Okay, first is a speaking is not a big deal. Speaking is not a big deal. Listening is not a big deal. The big deal is NCA. Even NCA is not a big deal. Even NCA is not a big deal. Okay. The big deal is to clear barrister and solicitor. Without barrister, without solicitor, NCA is zero. Absolutely zero. The point to be noted. So our main target is to barrister and solicitor. Make sense? How to clear barrister and solicitor? Just I'm gonna give you idea. Three exams: barrister, first week of March barrister, third week of March solicitor.
First week of June, barrister. Third week of June, solicitor. First week of November, barrister. Third week of November, solicitor. Three exam per, three exam per year. 4 hour and 30-minute exam. Barrister, 4 hour, 30 minute. Solicitor, Same. 30 minutes. Attractive class, right? 4 hour, 30 minutes. Okay. In one barrister, 160 question. In solicitor, 160 question. In 4 hour, 30 minutes. Mean almost 1 hour, 1 minute, 30 second. Plus minus. 1 hour, 1 minute, 35 second. Half page question in barrister, half page question in solicitor. One page, half page question. There are four options. Just imagine 160 question in barrister, 160 question in solicitor. So half page question. First, you have to read half page question in 1 minute 35 second. Then there are four options, very close options. So just imagine to clear barrister and solicitor, understanding skill should be important. Understanding means your reading skill should be good. Speaking is to clear the barrister and solicitor, speaking no problem. Listening no problem. To clear NCA exam, of course, first you're gonna read the question. Can you hold for 1 second? बड़ी गर्मी है। हाँ? इतना उनकी गर्म रहना। Right? Okay. So reading skill is very important. Again, to clear and to clear any NCA exam, you have to spend how many hours? To clear 100 hours. To clear any NCA exam, you have to spend 100 hours. 100 hours divided into three parts. 25 hours I'm gonna teach per subject. 25 hours you have to revise whatever I'm gonna teach. 50 hours, if you're gonna rely only on 50 hours, 50% chances you're gonna pass NCA. You're gonna pass NCA. So if you're gonna spend extra 50 hours, what was the benefit for extra 50 hours? Your understanding gonna be good. Reading skill must be important. If your reading skill is not good, if your reading skill is not good, you have to quit. आपको देखो ना विजन होना चाहिए विजन आफ्टर 1 year. So what is, I mean, आपको सारा पता होना चाहिए each and everything. You knew each and everything. Today I'm here, so I have to go to barrister and solicitor. What was the hurdles? You have to improve your reading skill. Reading skill is very important. Reading skill is very important. How to improve reading skill? You're gonna rely on my next 50 hours. Next 50 hours I'm gonna teach how to read. Go into Google, Baker. Go to the Baker. I will teach next 50 hours. What was the benefit of next 50 hours? So first benefit in NCA, if you're gonna rely only on 50 hours, 50% chances you're gonna pass, 50% chances you're gonna fail. If you're gonna rely 100 hours, more than 80% chances you're gonna crack the exam. In addition to cracking the exam, your reading skill is very important. If your reading skill is not good, don't even think to clear barrister and solicitor in Ontario. Then you have to go back to other than Ontario. Other than Ontario. Other than Ontario, I will let you know. But it's still not easy other than Ontario. Siplet or something like that. You got it? My point. Anuradha Nidhi. Yes. So, okay. So 5 subjects. Plus minus 5 or 6. 6 subjects. So how many are 6 subjects? 600 hours. 6 subjects, 600 hours. 600 hours mean 600 hours mean 100 per Subject. exam, per month. 600 hours, 600 hours, 6 months. In 6 months, you're gonna done your NCA in 6 months. In 6 months, you're gonna done your NCA after the first exam. In 6 months, you're gonna done your NCA, means 6 months, 6 subjects, 600 hours. Now 600 hours mean 100 hour per month.
100 hour per Nidhi? Per month. Per month, 100 hours. In 100 hours, divided into weeks, 4 weeks. So how many per week? 25. No, Nidhi. 100 hours divided into 4 weeks. In 1 month, there are 4 weeks. How many Yeah, per week? 25. Yeah, 25. 25 hours. 25 hours per week. In 25 hours per week mean Monday to Friday, never ever quit your job. Never ever quit your job. To clear NCA exam, to clear barrister exam, to clear solicitor exam, never ever quit your job. This is a part-time. So Monday to Friday, you're gonna work Monday to Friday, 9 to 5, no problem. You're gonna spend only 2 hours Monday to Friday. 2 hours mean Monday to Friday, 2 hours. 5 into 2 is equal to 10 hours. 10 hours are done. Then remaining 15 hours, you have a Saturday and Sunday. 5, 6 hours Saturday, 5, 6 hours Sunday. In 1 month, one exam is done. In 6 months, maximum six months, you're gonna done your NCA. After the 6 month, then you have to write barrister and solicitor. To clear barrister exam, again 300 hours. To clear solicitor exam, again 300 hours. 600 hours, including my teaching time. How to clear barrister and solicitor? How many hours? 600 hours. Same rule apply. Once you're gonna in 6 months, you're gonna done your NCA. Then next 6 months, you're gonna done your barrister and solicitor. Same rule apply. Make sense? 1 year. यार मैं कहता हूं 1 year. I'm very unlucky, very unlucky, very unlucky. I cannot clear in 1 year. Then 2 year. 2 years mean then 25 hours per week. If 2 years, then 12 hours per week. If you're gonna make a plan, oh, I have to clear barrister and solicitor, I have to clear NCA, then barrister, then solicitor. I'm very busy guy. I cannot spend 25 hours per week. Then you can spend 12 hours per week. Then 2 years. Ultimate 2 years gone like this. Make sense? Yes. Okay. Again, I'm telling you over and over, reading skill must be good. If your reading skill is not good, you're wasting your time. 100% you are wasting your time, even if you're gonna done your NCA in your reading skill, understanding. Read the question and understanding is very important. How to improve understanding? Last 50 hours is very important. Make sense? Yes. Nidhi, Piyush, Anuradha, any question? No. Yeah. No, sir. No. Okay. यार मैं आपको बताऊं इफ ओके एनीवे नो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैं आपको बताता हूं यार आई एम गोना इंट्रोड्यूस माई सेल्फ देर इज नो इंट्रोडक्शन फॉर मी माई इंट्रोडक्शन इज आई एम नॉट बैरिस्टर आई एम नॉट solicitor. Okay, my introduction: I have a speaking problem, I have a listening problem, I have an understanding problem, I have a writing skill problem. My background was terribly bad. My background used to be a terribly bad. Everywhere is a problem with me. But nowadays, I'm extremely successful. Honestly, I'm telling you right here, all people are becoming a newly lawyer. All are my student directly and indirectly. When I start my NCA, my one brother, he has done FRCS. He's the day first, he was a topper, grade 1, grade 5, grade 10, 11, 12, topper. Second brother, he was also topper. I was whole life, I was failure, and failure. I'm telling you right here. When I start my NCA, I have done 4 exams in, I think, 6 years, 6 to 7 years. But I know how you gonna clear the exam. I just told you. When I start my NCA, my level of education was, believe me, this is my dictionary. When I start, I'm gonna complete my NCA. I'm gonna start my NCA, start from Canadian Constitutional Law. After 2 years of hard work,
I got 30 marks out of 100. ठीक है? If I can do it, you can do it. Now I'm extremely successful person. You have no idea. मैंने आपको बुराई तो कर दी है. I give you, I'm talking against myself. Nowadays, how successful I am, you have no idea. I mean, everywhere is my lawyer. I mean, more than 100 students for barrister, more than 100 students solicitor. Everywhere is my student. If I can do it, you can do it. I was fail in grade 1, grade 5, grade 10. Constitutional law, after 2 years of hard work, I got 30 marks out of 100. Okay. The point to be noted, if I can do it, you can do it. Only determination, passion, determination. I will try my best. I will try my best. 50% you are fail. I will no matter what. And there are two options to become a lawyer or to become a successful lawyer is a big thing. To become a lawyer and to become a successful lawyer is a big thing. How to become a successful lawyer? Enjoy your path. What is path? Love whatever you are doing. You understand my point? I'll give you one example. When I start my NCA, see wording, acquittal. I start my NCA, acquittal, accuse, victim. मतलब मेरा beyond. मतलब I was so dumb. I was so dumb. But मेरा जुनून, मेरा जज्बा, ओके, हिम्मत, ताकत, मंजिलें उन्हीं को ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान है. खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता. हिम्मत, जुनून, जोश, जज्बे से उड़ान मिलती है. आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट. 50% पास, 50% फेल. आई विल नो मैटर व्हाट. फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस. डजंट मैटर यू. आप 10 साल बाद, आफ्टर 10 years ऑफ स्टडी, आफ्टर 20 years स्टडी, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट. आई हैव अमेरिकन लॉयर्स आर माई स्टूडेंट. They have done graduate from Harvard University, Oxford University, Stanford University, all over the world are my student. और मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, नीली छतरी वाले की कसम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आर माय स्टूडेंट. वो मुझे कहते हैं यार, द वे यू टीच, नो कंपैरिजन इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स. आई स्वेयर टू गॉड, आई एम टेलिंग यू राइट है. मुझे नहीं पता वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं. आई हैव नो आइडिया. बट दे ऑलवेज सेड Oxford University, Stanford University. I'm not talking about Canadian University. The point is, if I can do it, what was my standard? What was my standard? कुछ भी नहीं था. Now we have to clear administrative law. Just I need your eye contact. केवी क्या हो गया? कैमरा बंद हो गया? Okay. केवी, I need your eye contact, please. Anuradha, I need your eye contact. Or one other thing, to clear exam, in person is much better than online. In person is much better than online. If you cannot come in person, you have to watch my live class with camera on. Again, then 80% chances you're gonna pass the exam. Camera on, live class with camera on, 80% chances. Live class, camera on, 100 hours, live class, camera on, more than 80-90% chances you're gonna crack the exam. Behind the camera, I cannot say. Lot of people, oh, my preparation was so good, उनके हिसाब से good है, मेरे हिसाब से वो zero होती है. Day before yesterday, I taught solicitor. So the guy, he was my student. He was failed twice in solicitor. यहाँ पे day before yesterday. Tomorrow again he gonna come. He said I'm failing twice. मैंने कहा मैंने तो I didn't see you in my class. Not even who you are, even my student or not student. कहता मेरी बड़ी तैयारी थी. I swear to God, मैंने उसे intro class, third time he was joining my class for solicitor, उसको basic solicitor का भी नहीं पता था.
और वो लिख रहा था थर्ड टाइम एग्जाम। जस्ट इमेजिन यार, उसकी नजर में वो न्यूटन बना हुआ है, एडिसन बना हुआ है। आई स्वेयर टू गॉड, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन वो न्यूटन आइंस्टाइन एडिसन बना हुआ है। लेकिन जब मैंने कहा यार तुझे तुझे तो आता ही कुछ नहीं भाई, हाउ कम यू आर राइटिंग थर्ड टाइम, इवन यू डोंट इवन नो। आई स्वेयर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ रियल एस्टेट, सेकंड चैप्टर ऑफ रियल एस्टेट एंड थर्ड चैप्टर ऑफ रियल एस्टेट, दिस इज माई, किधर है, this is the for solicitor. He didn't even know first, second, third, but according to his opinion, I'm 100% okay. I give you thumb rule. My stance is neat and clean. आपने मेरे से पढ़ना है पढ़ो, or I'm 24/7 available. I'm 24/7 other than Saturday, Sunday. 100 times a day, you can give me a call. Doesn't matter you are my student. Doesn't matter you are not my student. I don't care. Whenever you need my help, 24/7, 100 times a day, you can give me a call. I always one telephone call away. If you are not my student, of course, I'm not going to give you my notes. I'm not going to give you my lectures. You can study on your own. You can study from anywhere and you can call me if you are stuck somewhere. Now come back to the point. To become a successful lawyer, I need your eye contact. I need your administrative law. Razia, administrative law. I need your eye contact. I need your eye contact. When I'm gonna say I need your eye contact, no one's gonna write administrative law. In Canada, there are two bodies in Canada: admin body and private body. In Canada, admin body and private body. Admin body and private body. There is no third body. Admin body is federal government is the admin body. Provincial government is the admin body. City is the admin body. Landlord tenant board, immigration board, university are administrative bodies. So private bodies, my office is a private body. Your house is a private body. So we are reading administrative law, not private law. Private law is somewhere other. Okay? है ना करिए, बंद कर दो. Administrative law. So I need your eye contact. My name is Aamer Chaudhry. My name is Aamer Chaudhry. For example, admin body before they're gonna fire me. For example, before admin body gonna take any decision, before admin body gonna take any decision mean if immigration board deputation order, landlord tenant board favor of me, against of me, okay, I'm a doctor in hospital before they're gonna fire me from the job. Whenever admin body gonna take any action against me, they have to follow the proper procedure. Proper procedure. They have to follow the proper procedure. If you will admin body, if you will not gonna follow the proper procedure, I'm gonna go to the court against the decision of the admin body based on the procedural grounds. I'm gonna tell to the judge, I am here. I am here because I am unhappy with the decision of the admin body based on the procedural ground. Admin body did not follow the proper procedure. Procedure fairness. So basically, admin body, procedure fairness, and substantive fairness. Procedure, substantive. Basically, admin law divided into two parts. One is a procedure fairness, one is a substantive. Bias is part of procedure fairness. Bias. So basically, there are three parts: procedure fairness. Procedure fairness in the exam, 40% marks gonna come from procedure, 40%. 40% procedure, 25% bias. Admin body must not be a bias. If they are biased, so we're gonna go to the court for judicial review because admin body was biased. 40 marks gonna come from 25% gonna come from bias, 65, rest of 30%, 35% Substantive. substantive. So basically, there are two judicial review. So again, I knew we're gonna start from procedure fairness. We're gonna start from procedure fairness. Are you learning? Yes. Razia, are you learning? At least say, Yes. my name is Aamer Chaudhry. Okay.
For example, I'm a doctor. I am doctor. Before Edmund Body fire me from the job, before Edmund Body they're gonna fire me from the job, you have to follow proper procedure. What proper procedure? I need. Okay, for example, I'll give you one scenario. I'm a doctor in maybe doctor with immigration board. They have their own doctor. Okay, in hospital, I'm an employee of federal government. I'm an employee of provincial government. Assume I'm a doctor in hospital. Assume I'm doctor in hospital. You know what? While job, I was sleeping. While job, I was sleeping. Supervisor came to my room. Supervisor with with two witnesses or three witnesses. Oh, Amir, you are sleeping. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Now, supervisor, I was caught by supervisor because I was sleeping. What supervisor gonna do? He gonna complain to they have their own board. They have their own board, hospital board. Now, hospital board, before hospital board make a decision, they have to follow the proper, what proper procedure? Hospital board, I'm here, hospital supervisor is here. Okay. So before hospital board, they have to follow the proper procedure. What proper procedure? They have to give me a notice. Notice, they're gonna give me a notice. Mr. Chaudhry, on this date, you were sleeping. On this date, you were sleeping. We had three witnesses against you. Witness one, witness two, witness three. And you have a court date. You have a hearing date. Hearing date is next month. It means they follow the proper procedure. First step, they have to give me a notice for hearing because that's my natural justice. Before they're gonna fire me, before they're gonna take any action, they have to give me a hearing. Hearing. Okay, hearing. Hearing can be oral, written. Don't worry about it. Are you learning? Yes, यार sir. मुझे जोश चाहिए जोश like a line like a line. I'll give you one example. Who's the tallest animal in the jungle? Giraffe. Giraffe, Graph. Who's a heavy animal in the jungle? Elephant. elephant, Who's the quickest animal in the jungle? deer, Fox, deer. Reflex action. Monkey. बंदर monkey. शेर को थप्पड़ मार के दरख्त पे चढ़ जाता है, शेर देखता रह जाता है. Who is a hard worker animal in jungle? Donkey. Who is the king of jungle? Lion. Nine. 18 घंटे सोते हैं, 18 hours slept. Attitude, because of his attitude. चाहे 100 hours पढ़ो, 100 hours should be 1000 100 hours. 1000 hours. यार, can you please KV, can you please आप ये बंद कर दें. I'll do it. Okay, thank you. Make sense? Be okay. अपना attitude. Make your like a line attitude. चाहे week if you're gonna read 25 hours, पूरे जोश और जज्बे के साथ, like what I'm doing. Again, I need your eye contact. My name is Piyush. My name is Amir Chaudhry. Who am I? In the I give you one scenario. Who am I? Body. doctor, Huh? No. Only your name is not Piyush, I think. Sorry, sir. But Who you are am I asking? who am I right now? In the given scenario, you are a doctor. I'm a doctor in hospital. I was sleeping. Supervisor came to my room. Yes, sir. Bring three witnesses. Witness one, witness two, witness three. Oh my God. Then he gonna call to his supervisor. Now, hospital board must send me notice for hearing. Notice for hearing. Hearing. Now he sent me a notice. Notice. Oh, okay. Notice.
Aamer Chaudhry, at this time you are sleeping. Okay, at this time you are sleeping. We have three witnesses, one, two, three. Okay, and come to the hearing. No problem. They have done their procedure fairness. Notice. First step is a notice. Then second step is a discovery. What is discovery? Disclosure. Discovery, disclosure. Or third step is sufficient delay. Sufficient delay. Mean today I received a notice. Hearing date is tomorrow. Violation of procedure fairness. I received a notice today. Hearing date is tomorrow or day after tomorrow. Is a sufficient time. There should be a sufficient time. If there is not a sufficient time, if this is not a sufficient time, violation of procedure fairness. Procedural fairness. Okay. Now notice, discovery, and delay. This is a notice, discovery, and delay mean there is a sufficient time between the notice received and the hearing date. Now hearing is going on. Now hearing is going on. Hearing. Who is this guy? Admin body. Hospital board. Hospital board. My name is Aamer Chaudhry. I'm here. Other party is hospital supervisor or hospital. Hospital board is independent. Hospital, this party, admin body. Hearing is going on. Hearing. In the hearing, in the hearing, in the hearing, what I deserve in the hearing. A hearing, that's my procedural right. In the hearing, give me an example. In the hearing, what I deserve from admin body in the hearing. Use your On common sense. counsel. Opportunity of being heard. Right to counsel. For example, I can, admin body, you are here, I am here. Before you gonna make a decision, hospital board is here. I can bring my own counsel, right to counsel. Right to counsel can be doctor. Right to counsel can be lawyer. Right to counsel can be anyone, non-lawyer, paralegal. Right to counsel. If when I brought right to counsel, and you stop me, no, you are not allowed to bring right to counsel. You stop me, don't bring right to counsel. Violation of Procedure Procedural, fairness. procedural fairness. procedure fairness. What gonna happen after the decision is okay, no problem, no problem. I'm not gonna bring my own right to counsel. Decision has been made against me. What happened? Decision has been made against me. Then this is a final decision. I was so upset. I was so upset. We have a page. Only one page. One page. Okay. So decision is against me. This is a decision I received from admin body. So Mr. Chaudhry was very upset because he was fired from the job. He is our fact pattern. Now I came to your office. I came to your office. You are administrative lawyer. So you have to go to the court. You have to go to the court against the decision of the admin body, which is a hospital board. Hospital board. So I'm going to tell judge, I am unhappy with the decision of the admin body because admin body did not follow the proper procedure. What proper procedure? Notice, no problem. Good. Discovery, disclosure, no problem. Sufficient time between the notice received and the hearing, no problem. Judge was biased? No. Judge was not, decision maker was not biased. The main issue is right to counsel. Violation of my procedure fairness. Judge, you have to give order. Okay. None. Please quash this decision. Quash this decision because violation of my procedure fairness. And give them order. Please rewrite my hearing. Rewrite my hearing. Give me a hearing again where I can bring my own right to counsel. How is gonna work out? I just give you one example. Again, I need your eye contact. Ashna,
Who am Yes, I? sir. From the start, zero. Who am I? Private body, a doctor in this case. I'm a private body. As Who in, am you're a I? doctor. I'm a doctor. That's it. I need an answer. I'm a doctor, right? Yes. Yes, sir. What happened in the hospital? I was sleeping. Yes, sir. Supervisor came here with, he wake me up. Oh, sorry. Mr. Chaudhry, you were sleeping while job. We had 3 witnesses. Now he gonna make a report. Right now, he gonna make a report. Basically, okay, right? So he gonna make a report right now. Right now, he gonna make a report. He's giving me Mr. Chaudhry, you are on duty. I have 3 witnesses. Basically, he gonna make a report. Report, of course, report. He gonna give it to me. Whatever your report. One report he gonna give to admin body. Supervisor gonna give to manager gonna ask, of course, manager gonna say me, Mr. Chaudhry, whatever. So admin body is a hospital board. So hospital board gonna, before hospital board gonna make any decision, they must follow my procedure fairness because they are required by Canadian law. So first admin body gonna give me a notice. Oh, notice for hearing. Notice for hearing. Here. In the notice, oh, this time he was sleeping, I was sleeping. There are 3 witnesses. Notice requirement has been met. Discovery, disclosure. There are 3 witnesses. Requirement met. Same notice which supervisor give it to me. Because supervisor, first copy supervisor, second copy he give it to me. Same. Make sense? Okay. Yes. So same or 3 witnesses, there is a sufficient between the notice received and the hearing date. After 1 month is hearing. Now his hearing is going on. In the hearing, I have a right to brought my own counsel, which he allow me. No procedure fairness violation. Then what else? While hearing, who is this guy? The judge. Admin body, hospital board, Hospital board. doctor. Hospital is here. Hearing is going on. I brought my own right to counsel. What else? If you are not satisfied with the judge's decision, then we will go to the judicial review. It's not a decision. Procedure. What procedure? So it's a fair procedure. Everything is going good. I need your icon. Not everything is going good. First, I have a right to bring my own Counsel. counsel. Then right to cross-examine to all witnesses. This is my right. Yeah. If you are using 3 witnesses against me, I have a right to cross-examine to all witnesses. Witness Yes. 1, witness 2, witness 3. Maybe witness 3 was under the age of 18 years or he was scared. He don't want to come forward. If you don't want a board, third witness, I have a right to cross-examine to the all witness. But you said third witness is scared. He will not gonna come forward. Then exclude this witness. If you will not gonna exclude, violation of my procedure fairness. Then I'm gonna go to the court. I'm gonna go to the court and I'm gonna tell to the judge, admin body did not follow the proper procedure. What proper procedure? Notice requirement met from Hospital. admin body. Admin. Notice discovery requirement met. Delay, no issue. Right to counsel, no issue. No issue. Right to cross-examine to witness 1, judge, no issue. Right to cross-examine to the witness 2, no issue. When I start right to cross-examine to the witness 3, they said he is or she is vulnerable. You are not allowed to cross-examine to the witness 3. According to my opinion, then exclude witness 3. If you're gonna include, right to cross-examine. Now judge gonna make a decision. Judge gonna say your decision is null and void. Whatever. Make sense? Yes. Come back. Again, come back. Again, come back. I need your eye contact. KV, I need your eye contact, please. Who am I, KV? Who am You're I? a doctor. I'm You're a doctor. I need your eye contact. Confused नहीं कर रहा, बोर तो नहीं हो रहे.
I was sleeping while job. I was sleeping while job. Supervisor came to my office. Supervisor came to my office. यार आप बंद कर दें अपना केवी प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ okay so supervisor came to my office he wake me up oh what happened Mr. Chaudhry are you sleeping doctor are you sleeping while job I have a three witnesses so he gonna make a report of course right now he's sitting in front of me he's making a report one copy he gonna give it to me one copy he gonna give it to their management okay management before they're gonna make a management means board okay board basically hospital board for example even no even management hospital board before hospital board fire me from the job they must follow the proper procedure what proper procedure first they have to give me a Notice. notice Notice. oh notice for hearing second Discovery. discovery Discovery and means disclosure how many witnesses against me three witnesses three. third Sufficient delay delay. sufficient time between the notice received and the hearing time. Yeah. There should be a sufficient time. Depend on the circumstances. Three. Then now hearing is going on. Hospital board, doctor, and supervisor or hospital management, whatever. Okay. So I brought my own right to counsel. No problem. No problem. No violation of procedure fairness. Then second, right to cross-examine to all witness. 1, 2, 3. They allow me no procedure fairness. Okay. What else? Bias is part of bias is next step. He can be a bias. He can be a bias. Bias is next step. While hearing, he can be a bias. Bias is next step. Okay. He allow me to bring right to counsel. They allow me to right to cross-examine to one witness, second witness, third witness. What else? Use your brain while hearing. We can provide witness. Huh? The doctor can provide witness. Exactly. I can provide my own witness. Doctor, I can provide my own witness. A hospital board at this time, I was not sleeping. I have my own witness. You told me I was sleeping at library, but by that time I was at emergency ward. Same time, my witness, this is my witness. You must wait. You must see my witness. If you will not gonna waitage to my witness, violation of admissibility of evidence. This is called admissibility of evidence. This is called you have to see my witness. If board gonna say, oh, I don't care about your witness. Board, you don't care about my witness? No problem. Make a final decision after that. What board said? I will not admit your evidence. I will not admit your evidence. Mean admissibility of evidence. Okay. After that, they fire me from the job. They fire me. Doctor was very upset. Doctor is very upset. I need to eye contact Piyush. Doctor is very upset. Now, I was very upset. I came to your office. You are an administrative lawyer. You have to go to the court for judicial review. Exam will start. These are fact pattern. You will read in the exam, fact pattern. Then doctor is fired from the job. He came to your office. You have to write a memorandum for this doctor. Start memorandum. Start writing. Exam start. Now exam start. I am here behalf of Mr. Chaudhry. Judge is there. I think I am unhappy. Judge is there. You are telling to the judge. Same time you are writing the question. I am unhappy with the decision. I am Mr. Chaudhry lawyer. Mr. Chaudhry is unhappy with the decision of the admin body because they did not follow the proper procedure. They did not follow the proper procedure. Notice, no problem. Discovery, no problem. Delay, no problem. Right to counsel, no problem. Right to cross-examine, no problem. When he show his own witness, they said, we will not gonna admit your witness. Violation of procedure fairness. Is cheese ke you gonna get the marks.
Okay, then judge gonna make a decision. Then maybe if judge gonna say, did you do? Board, did you do? Of course, they did it. Judge gonna say, I would quash the decision of the admin body. Okay, send it back for rehearing, conduct rehearing, and in the rehearing, give him weightage to his witness. Exam is done. Again, I need your eye contact. मैं आपको बोर नहीं कर रहा. It's important. I need your eye contact. Razia, who am I? Doctor. I'm You're a a doctor. doctor. I'm a doctor. I was sleeping while job. Who came to my office, Razia? I am supervisor. Supervisor, wake me up. Oh, what happened, supervisor? I'm sleeping. Okay. So supervisor said, you are sleeping and I have 3 witnesses. He gonna make a report. Supervisor is like an investigator. He is making a report. Mr. Chaudhry was sleeping at this time. We had 3 witnesses. One report he gonna give it to me. One report he gonna submit to his supervisor or manager. Manager gonna call to the board. Then before board gonna take any decision, board or admin body board, hospital board. Before they're gonna make any decision, they have to follow the proper procedure. They have to follow the proper procedure. What proper procedure? For the time being, I was suspended from the job or I was not suspended from the job. I received a letter from the board. Administration. Letter, notice, requirement met. Discovery, 3 witnesses, requirement met. You will see in the exam. Okay. Sufficient time between the notice received is requirement met. Okay. Then in the hearing, right to counsel, no problem. Right to cross-examine to all witness, no problem. Okay. Mr. Admissibility of evidence, no problem. If problem, then problem. No problem, then no problem. What else? Hearing has to be open. Open for general public. Hearing it shouldn't be a closed. Hearing must be a open for general public. General public mean Toronto Star can come. Anyone can come. Hearing must be a open. For example, while hearing, decision maker told me, Aamer, while hearing, can you please get outside, wait outside for 5 minutes? I have to talk the witnesses. Again, I have to talk against your witness or my witness or your witness in your absence. In my absence, of course, he's a decision maker. He's gonna say, Mr. Chaudhry, hearing is going on. I have to talk with your witness or with other witnesses. Can you please go out from the room for 5 minutes? Violation of procedure fairness. Violation of procedure fairness. ये देखो, ये I make my own notes. Just hold on. एक second देखें. See my screen. A second. Are you enjoying? ये देखें. See, this is Baker versus Canada. Notice, discovery, delay, pre-hearing issues. These are 3 pre-hearing issues. I don't know, numbering is wrong. 1, 2, 3. Notice, discovery, delay. Then I need oral hearing. Hearing must be open. Right to counsel. Disclosure and don't worry about disclosure and official notes. Admissibility of evidence. Right to cross-examine. These are procedure fairness. While hearing, it can be bias. See, next step is a bias. See, bias. These steps, bias, antagonism during the hearing. Okay, statutory. These are bias steps. We will discuss in next classes bias. While hearing, admin body can be a bias. There are 5, 6 steps for bias. Okay. So pre-hearing, hearing issues are done. After the hearing, last issue, duty to give reason. Hearing is done. Then
Done. Then hearing is done. Judge gonna decision maker gonna say, you know what, Amir? So we have to make a decision. We gonna take 5 minutes, 5 days, 10 days. We'll send you our decision. After 5 days, when I open envelope through email, through anything, oh my God, Mr. Chaudhry, you are fired. We are giving you the proper reason. Proper reason. So due to give reason. Final. After that, Mr. Chaudhry was very upset. Chaudhry was very upset. Step out, came to your office. You people are administrative lawyer. You have to write a memorandum for Mr. Chaudhry, who is a doctor. Okay? Who is a doctor. Now what will you do? Exam start. Now you're gonna typing. Back of the mind, judge. I'm a defense lawyer, behalf of Aamer Chaudhry. Other parties are prosecutor nahi, hospital board. Hospital board. Prosecutor is for hospital board. Sometime can be a prosecutor. Hospital board. So I am unhappy. You are telling to the judge, same time you are writing in the exam. I am unhappy. Same time you are writing the exam, typing. Or same time you are telling to the judge, I am unhappy. Judge, I am unhappy with the decision of the admin body because admin body did not follow the proper procedure. What proper procedure? I told you. Is done. So court have their own procedure. They have their own procedure. Court, they have their own procedure. What procedure? There are 6 steps, against 6 steps, against 6 steps. One room, 2 steps, 3rd step. Make sense? So judge, they have their own protocol. Sir, you are a judge. I am here behalf of Mr. Chaudhry because we are unhappy with the decision of the admin body because admin body did not follow the proper procedure. Before we gonna go which proper procedure, they have their own protocol. They have their own what protocol? Refer to my notes right here. ये देखें screen. First, so, okay. So, Razia, can you read? Judicial review is available. First step, judge is there. We are here. Exam start. Back of the mind, we are in the court. Back of the mind, while giving the exam, we are in the court. Back of the mind, judge here. I am here. Exam. Can you read, Razia? Please. Razia? When assessing an application for judicial review, the very Read, first speak, आहिस्ता हमें understand करना है. Speak very slow, little louder. when assessing an application for No, judicial yeah. review. एक second, can you hold for 1 second? Yeah, please, can you read? When assessing an application for judicial review, the very first question asked is whether judicial review is available. This involves answering 5 preliminary questions in the affirmative. Number 1, is the administrative decision maker a public body? Maybe if it's a private body, application would be rejected. So what is the name of the public body? In this scenario, Yeah. hospital board. Nidhi, can you please turn on your... Who is Yes. the public body? Hospital authority. Hospital board. Board. Nidhi can read. Nidhi. Hospital board. Okay. Second. Does the applicant have a standing to challenge the decision? Who is the applicant in the given scenario? Doctor. Doctor. Yes, Dr. Chaudhry have a standing to challenge the decision. Of course, decision is against me, not against other doctor. Mr. Chaudhry have a standing to challenge the decision. Number 2. Number 3, which court should the applicant apply for judicial review?
Okay, answer is if okay, hospitals are under provincial government. Hospitals are under provincial government. If hospitals are under federal government, then Federal Court of Appeal. Which court if federal department, we're gonna go to the federal court. If provincial court, divisional court, provincial court. So in the given scenario, Divisional divisional court. court, a superior court of the province, not federal court. If I was fired from the railway, then which court we gonna go for judicial review? Federal court. Federal ठीक court. है. Fourth, have any deadlines lapsed? So there are 30 days. There are 30 days. 30 days. So yeah, 30 days. When admin body gonna give the decision, after the decision there are 30 days. Within 30 days after receiving the decision, I must go to the court for judicial review. Otherwise, 30 days gone, then deadline lapse. Has the Okay. applicant exhausted all other means of Very recourse? important point. Very important point. Very important point. Okay. Premature. Okay. Just hold on. Just hold on. Right now, Ashna, right now, where we are right now, in the real picture. So Who's that after guy? so after the hospital board has given its decision, we are going for judicial review. Judge, just hold on. Judge, defense lawyer, behalf of Mr. Chaudhry, hospital Yes, sir. board. So very first step, decision maker is a admin body. Yes, hospital board is a admin body. Second, Mr. Chaudhry have a standing. He was fired from the job. Heard? Provincial court, divisional court in the province. Fourth, deadline lapse. If issue, then no issue. If 30 days gone, deadline lapse. So no judicial review. Fifth is very important. Have you exhaust all remedies under the admin body? It's very important point. Very important. It's very important point, Piyush. Example. Don't worry about everything. Example. For example, if you are fail in NCA exam, if you are fail in NCA exam, so what will you do? So directly, can you go to the court for judicial review? What will you do? NCA board, you have to apply because sometimes Appeal. you will see in the exam or decision of the board is final and binding, but you have a right of appeal within the statute. For example, if you are fail in NCA exam, you have a right of appeal. For example, I need your eye contact, Anuradha. I need your eye contact. Ashna, Ashna. If I'm gonna Yes, punch sir. to your face right now, what will you do? Can you go to court for judicial review? No, Although sir. judicial is not A available complaint for will be filed first. first, you have to complain 911. Then people will not gonna do 911 will not gonna do. Then you can start private proceeding before the judge. So same time, if Mr. Chaudhry, they will give you in the exam or decision of the hospital board is final and binding with no right of appeal. Then one last option is I can go to the court for judicial review. If decision of the admin body is you have a right of appeal. You have a right of appeal. It means first I have to avail the right of appeal, then I have to go to the court. Court must be a last resort. Court gonna say, have you exhaust all remedies? If I'm gonna punch to your face, you have to call 911 rather to take private proceeding before the criminal court. Same thing, immigration board, deputation order. Immigration board, आप तो काम कर रहे हैं immigration board. If appeal has been rejected, what will you do? Right of appeal within the statute. Usme only lawyers can go, right? Appeal. If immigration board deputation order, you have a right of appeal within immigration board. Again, they're gonna reject
That is a final decision. The point to be noted, room number 1, step number 5, decision must be a mature, not premature. If right of appeal is available, I must avail that right of appeal. Then I'm going to go to the court for judicial review. That decision would be Mature. mature or immature? Yes. If I avail, if there is no right of appeal is available, if there is no right of appeal is available, then this is final decision. This is also final decision. Make sense? It's very important. We're gonna solve one question very soon. Okay? Make sense? First step is done. Maybe decision is mature, judge will entertain next step. If decision is premature, application has been rejected for judicial review. Mr. Chaudhry, go back, avail, final, bring a final mature decision. Sorry for You, interruption. Can yeah, go ahead. can you give one more example for the premature, because I'm a little confused. Okay, Nidhi, if anyone is fail in NCA exam, they have a right of appeal. Now, I am fail in NCA exam. I am fail in NCA exam. I have two options. Basically, okay, there is a right of appeal. If you are fail in NCA exam, still they're gonna give you one page. You have a right of appeal. So this is a premature decision. First, I must avail right of appeal. Then I have to go to the court for judicial review. That would be mature decision. If right of appeal is available, I decided I'm not going to go for right of appeal. Rather, right of appeal, I'm going to go to the court for judicial review. His decision would be Nidhi. Yeah. Decision would be final if I have a right. no, मेरा बेटा, I need your eye contact. आपका ध्यान, I need your eye contact, please. I'm going to speak slow. If I'm fail in NCA exam, हाँ या ना में करें ना आप Okay. क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ना अट्रैक्टिव Okay. क्या कहते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव Interaction. Interactive. इंटरेक्टिव क्लास इंटरेक्टिव क्लास ठीक है वो चाहिए देखो वही बात आ जाती है यार इंग्लिश मेरे से नहीं हमसे इंग्लिश है नॉलेज इज अ पावर कोई लोग कहते खड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता खड़ा नॉलेज होगा ऐसे ही कहते ऐसे ही यार सारी दुनिया एक तरफ नॉलेज इज पावर ओके Right. अगेन आई नीड आई कॉन्टैक्ट आई एम NCA student if Okay. I'm fail in NCA exam Yes. they're gonna give you option. They will give me an option. Aamer, you are fail in NCA exam. You can right of appeal in NCA board. Okay. So basic rule is I must avail that right of appeal. But Okay. I decided I'm not gonna go for right of appeal. I will not gonna go to the right of appeal. Instead of appeal, I'm gonna go to the court for judicial review. Yes, Nidhi, that decision would be mature or premature. Premature. On what point it's gonna be mature? Because first I have to go, if I know the right of appeal, I have to go to the right of appeal before going to the court. Yes, exactly. If statute is silent, exam is silent, silent means that decision is final and binding. Got it. Okay, first room is done. So you will be tested in the exam. You will be tested. We're gonna solve one NCA sample question. Okay. एक सेकेंड ठहर जाओ सेकंड अब देखो ये सेकंड रो अगेन आई नीड योर आई कॉन्टैक्ट दिस इज कॉल्ड सोर्स रूम नंबर 2 इज सोर्स निधि आई नीड योर आई कॉन्टैक्ट Yes. room number 2 we are in room number 2 so we Yes. are in before the admin body we are Yes. in the admin body is taking our hearing in room number 2 नो नो बेटा आशना आप देखें एनसी में आप नकल नहीं कर सकते मैं आपको एक बात बताऊं इट्स जस्ट होल्ड ऑन आई एम गोना स्पीक इन माय ओन लैंग्वेज इफ आई एम गोना आस्क निधि गोना गिव मी आंसर क्योंकि एग्जाम में ये कोई हमारा कंट्री तो है नहीं कि एक दूसरे को नकलें करके बताते हैं हाँ या ना इधर अपना अपना पेपर है ये यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे अपना अपना अगर I'm gonna ask निधि हैज टू आंसर मी मेक सेंस
अगर आप कह रही हैं नहीं, तो वो फिर निधि को तो नहीं समझ आएगा, है ना? तो मैं तो एक एक स्टूडेंट के लिए फाइट करता हूँ। मेरे यू पीपल आर माई चिल्ड्रन। मेरे 100 बच्चे पास हो जाते हैं, मोर देन हैप्पी। मेरा एक स्टूडेंट फेल होता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं एक एक बंदे के लिए फाइट करता हूँ। पता नहीं वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? सोर्स, सोर्स ही पूछ रहा था। ओके Room number निधि, 2. वेयर वी आर राइट नो, बिफोर द एडमिन बॉडी? We are in before the admin body, right? Hearing is going on before the admin body, right? We are in the court or we are in the admin body? Admin body. We're still in the admin body. Yes, Ashna, we are still in the admin body. No, sir, we are before the court. We are examining whether we can go before the court or not. Oh, right. Okay. Okay, Nidhi, I need your eye contact. Again, I need your eye contact. Yes. Only Nidhi gonna give me answer. I'm not wasting your time. I'm not wasting your time. Honestly, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग देखो यार। एक सेकंड, मैं आपको क्लियर कट आपको बता दूं। ये देखें, जस्ट होल्ड ऑन। आप देखें, ये है पब्लिक लॉ। दिस इज, I need your eye contact. This is for barrister. This is for barrister. अगर आपका अभी तैयार नहीं होगा तो barrister में you gonna face a problem. Okay. ये देखो, पढ़ो administrative law. Can you read okay, number 2? Can you read number 2? Administrative law is the body of principle that governs the exercise of powers granted by statute to Last पीला पढ़ administrative दो। tribunals and certain other decision makers. एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड, ये देखो, एक सेकंड ठहरो। क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजरल लिमिट्स, ठीक है? Yes. ये क्या लिखा हुआ है? Judicial review. ये सारा, if you will not good in NCA, you okay, ये देखें, एक सेकंड, ये क्या लिखा है? राइट टू बी हर्ड। Yes. ये क्या लिखा हुआ है? इम्पार्शियल डिसीजन मेकर। Yeah. ठीक है? Okay. अब ये देखो, इफ यू विल यार, इफ यू विल नॉट गोना, इफ यू आर नॉट गुड इन NCA, आप बैरिस्टर का एग्जाम, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आप ये देख रहे हैं ना, फेयरनेस, प्रोसीजर फेयरनेस, ये देखें, जस्ट 1 सेकेंड। ये क्या लगा? सब्सटेंटिव डिसीजन, प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव। Yeah. मेक सेंस? Substantive review. Yeah. हाँ वही ना, ये देखो, प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जस्ट फॉर 1 सेकेंड, जस्ट फॉर 1 सेकेंड। So read last 2 paragraph, this one. Divisional code and federal code are I can't read. Anyway, तो आप वो पता चल जाएगा दिखाई नहीं कि दे रहा proper. okay, number 2, who gonna read number 2? Jurisdiction of the court to review administrative action. मेरा बेटा जल्दी जल्दी पढ़ देना। There are Uh, So don't worry about it, don't worry about it। अब नहीं समझ आ रहा तो क्या किया जा सकता है? तो I mean judicial review, total book is a judicial review, total book is a judicial standard of reviews, total book is judicial review. The point is procedure fairness substantive. If you are not good in NCA, तो barrister solicitor you are unable to clear the exam. इसलिए concept must be clear, concept must be clear, open book test, open book test, concept must be clear. अब Nidhi, I need your eye contact. yes. While job I was sleeping, Yes. supervisor came to my room. I'm a doctor. He wake me up. He said, Mr. Chaudhry, doctor, are you sleeping? I have a 3 witnesses. So he gonna make a report. He's an investigator. Of course, he's investigating the facts. After investigating, I'm sleeping. So he gonna give me some notice. Of course, investigator report. I need investigation report. One investigation report. Then same investigation report,
he gonna give to the board or management. So management or hospital board gonna send me notice. In the notice, I have to look at, oh, notice. Okay, at this time, Mr. Chaudhry was sleeping. Supervisor is the witness. He brought 3 witnesses. Okay, disclosure, notice requirement met, discovery requirement met, disclosure. Okay, delay, no issue. Now, hearing, in the hearing, I brought my own counsel, right to cross-examine to all witnesses. Hearing was open, admissibility of evidence, no issue. Or some issue. Of course, there would be some issue. Any issue may be right to cross-examine can be issue. Right to cross-examine can be issue. Issue can be anything. Now, hearing is gone. I'm waiting in my home. After 1 week, I open my email. Mr. Chaudhry, due to give reason, you are fired from the job. Mr. Chaudhry is very upset. He step out from the admin body. I'm fired from the job. Now I came to your office, ready who you are. I Sorry. step out. I took the decision from the admin body. Mr. Chaudhry was fired from the job. Okay. I came to your office. Who you are? A counsel. Yes, you are a lawyer. Now you're gonna go to the court for judicial review. Room number 1. So what is room number 1? We are in the court. We are at the court. In the court. We are at the court. First step, we are in the court, right? Room number 1, judicial review available in the court, not in the admin body. So you're gonna tell to the judge, who is the public body, Riddhi? Admin body. बेटा नाम लेना admin body का ना. Hospital. Hospital board. Yes, Who is applicant? Doctor. Doctor. Which court? Divisional court. Why divisional court? Because it comes under the provincial. Under the provincial, exactly. Any deadline. Has the applicant exhaust? I just told you, right? Yes. Okay. Nidhi, okay. Then room number 2. We are where we are right now? In the court or in the admin body? We are in the court. Wow, we are in the court. Now, judge, excuse me, I need your eye contact. Who is this guy? Judge. Defense lawyer or doctor. Admin body is here. Room number 2. Judge gonna say judicial review is available. Then second task before the judge is, judge gonna ask in the room number 2, Mr. Chaudhry, what is the exact issue? What procedure fairness they did not follow? What exact judge gonna ask me? And you have to ask your question. Judge gonna ask me in the mind, what exactly they did not follow the proper procedure? I'm gonna say right to counsel. When I brought my right to counsel, they stopped me. They stop me. Okay, judge gonna say, you know what? Judge is bound, judge will think in the mind. Judge is bound by this question. This question is like a Quran, Gita, Bible, Guru Granth. This. So we are bound by. Judge is bound by this question. This question is first 3 steps. Room number 2, first 3 steps. Enabling statute, subordinate legislation, policy and guideline. So these are enabling statute. Exam question is subordinate legislation. Exam question is policy and guideline. If wording, they may provide right to counsel. Beautiful, yaar. They may provide right to counsel. It means they have a discretionary power. Exam question giving the power to admin body. You have a discretionary power. May or may not. Oh, beautiful, yaar. Oh, very nice. एकदम ही उठ गए हो तुसी सुते सुते. Very beautiful. May or may not. If wording is in the given scenario,
admin body may provide right to counsel. Judge gonna say, Mr. Chaudhry, under the enabling statute, under the subordinate legislation, under the policy and guideline, because power drive from this question. Judge is also bound by this exam question. This you are also bound by. Admin body is also, no admin body is here. They are also bound by this one. So judge gonna say, under the enabling statute, subordinate legislation, policy and guideline, I cannot see specific provision. They have a discretionary power. They may provide, they may not provide. If they will not gonna provide, I cannot force, because I'm also bound by enabling statutes, subordinate legislation, policy and guideline. Make sense? Make sense, Riddhi? Yes, yes. Okay, now we are. So number 4, don't worry about SPPA, don't worry about. Now common law entitlement to procedure fairness. Now common law entitlement to procedure fairness. Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. Sir, I have a question. Yes. Anuradha. It means if the enabling statute, it means under which, if enabling statute is not allowing us to go for an appeal, to go for a judicial review, so we cannot go to the court. I mean, I have नहीं आप misunderstood इसको everything. ये क्वेश्चन नहीं है, इसको इस टोटल इररिलेवेंट क्वेश्चन. आप बस मेरे पॉइंट्स को फोकस करें. टोटल फोकस माय पॉइंट. You are running out of town. For sure, you are running out of time, out of town. I need your eye contact. Okay. So room number 1 is done. Now what is room number 2? Anuradha, what is room number 2? What judge gonna ask me exact focus? If I'm gonna teach you A for apple, stay on A for apple. Don't think A for aunt, A for America, A for Ali, A for Aamer. If I'm saying A for apple, stay A for apple. Don't think, oh, A for it can be this one. First, I'm gonna give you basic structure. First, I'm gonna give you basic and very strong structure. Whenever we're gonna read within the structure, do not departure, then read. First, understand the structure. अब आप structure को follow करें. What is the structure? Judge, I'm here. Admin body is here. Judge, admin body did not follow the proper procedure. What proper procedure? Because they did not follow the proper procedure. Judge gonna ask, before we're gonna go to proper procedure, they have their own protocol. What was the first step? Judge, we have to tell to the judge. Decision maker is a hospital board. Second, Dr. Chaudhry have a standing because he was fired from the job. Third, provincial code. Fourth, no issue with the deadline. Fifth, decision is mature or decision is premature. If a premature, application for judicial review is Rejected. huh? Rejected. Rejected. If decision is final, mature, then we're gonna go to the next step. Now, next step, Anuradha, next step. Mhm. Next step, what should judge gonna ask? What step judge gonna ask from me? Anuradha, only from Anuradha. Sir, वही that enabling statute, whether the statute enable, वही मुझे समझ नहीं आया. यही तो क्योंकि आपका क्वेश्चन in your mind, room number 2, judge gonna ask what exactly admin body did not follow the proper procedure. Why you are unhappy? Which step admin body did not follow the proper procedure? Maybe notice, maybe discovery, maybe you are unhappy with judge's bias. Maybe what is the exact issue? In room number 2, judge gonna ask what is the exact issue. Maybe he's a bias. Then I'm gonna proceed like a bias. Maybe he did not provide you right to counsel. Example, they did not provide right to counsel. Judge gonna say, you know what? Judge, in your mind, judge mind. Judge is also bound by this exam question. Everyone is bound by this exam question. Judge gonna say, under the act, subordinate legislation, you're gonna write, under the act, subordinate legislation, policy and guideline, we cannot see any specific provision because they have a discretionary power. Word in the given scenario is may.
May mean they have a discretionary power. They may provide, they may not provide. If they will not gonna provide, judge cannot force admin body must provide. Unless wording should be must. Clear. Must provide. अगर ये लिखा हुआ है एडमन बॉडी मस्ट प्रोवाइड, कहीं ना कहीं लिखा होगा मस्ट प्रोवाइड. इफ मस्ट प्रोवाइड दे डिड नॉट प्रोवाइड, then judge gonna say a violation of room number 2 under the act, spontaneous legislation, policy and guideline. Look at the wording, must provide right to counsel, and they did not provide, violation of this ये जो भी है yeah Procedural fairness. under, yeah, make sense. Procedural fairness. Now, Yes, sir. okay, but in the given scenario, they 99%, 99.9%, they have a discretionary power. Then next step, judge gonna go common law. Judge gonna say, Mr. Chaudhry, wait. Now common law power. Common law. Judge has an independent power. Independent power. Just hold on. Just hold on. देखो. Common law entitlement to procedure fairness. देखो, common law. Common law means judge has independent power. Common law. Cut, copy, paste. Where common law, judge will not gonna intervene on admin decision. There are two things. There are two matters where judge will not gonna intervene. Intervene का मतलब है मुदाखलत नहीं करेगा. Court will not gonna intervene in two matters. If decision of the admin body is legislative or emergency. If decision of the admin body is legislative or emergency. Now we need to understand what is the meaning of legislative, what is the meaning of emergency. Legislative, I need your eye contact. Legislative. No difference between legislative and this decision is legislative. I need your eye contact. You can even write, is total up to you. Legislative decision in general. Write it down. Legislative is equal to in general decision. In general. If particular decision, not legislative. Write it down. If legislative decision mean in general decision of the admin body, legislative, in general. Example. Legislative decision mean in general. If in general decision, court will intervene, yes or no? Nidhi? No. No, because court will not gonna intervene. Court means common law. Judge will not gonna intervene if decision of the admin body is legislative. Example of legislative. In general decision. For example, a hospital decided lay off because business is going down. They decided if you have a less than 10 years experience, we'll give you layoff. Is particular or is legislative? It's legislative in general. जो भी who has less than 10 years experience, doesn't matter he is Hindu, he is Sikh, he is Muslim, he is white, he is brown, he is black, he is gay, he is lesbian. Is general. Or particular decision is, but in the given scenario, I am fired from the job. It's a general decision. Particular decision. No, Nidhi. Oh, sorry. Yes, Nidhi. What was the question? So in the given scenario. Actually, my baby is crying, so. Okay, no problem. In the given scenario, hospital fire me from the job. It's a general decision, legislative decision. No, this is the particular decision. So it means court will intervene or court will not gonna intervene. Court can intervene. Court will intervene. Will intervene. It's a particular decision. If legislative decision, for example, deputation order, there was one case, Singh
वर्सेस मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन बोर्ड, सिंह वर्सेस मिनिस्टर, सिंह डेपुटेशन ऑर्डर, मिस्टर सिंह डेपुटेशन ऑर्डर, दैट वाज अ पर्टिकुलर डिसीजन और दैट वाज अ लेजिस्लेटिव डिसीजन, Particular. particular decision. Court will intervene or court will not going to intervene. Will Court intervene. will. हाँ नहीं, अनुराधा निधि को बोलने दें. Court ठीक है will सर. intervene Intervene. because it's Okay. not a Intervene. formula. Okay. Example. One more example. Immigration board decided. Immigration board decided in order to get PR, in order to get PR, we need to qualify 550 marks. 550 marks. If you're gonna attain the 550 marks, you are qualified for immigration. That was a legislative decision. Yes. This is a Yes, legislative decision. So I'm gonna say, oh, 550 is too high. Hey, immigration board, I am unhappy with your decision. 550 is too high. How we gonna get 550? I'm gonna go to the court for judicial review. So court will intervene. no. हाँ अनुराधा, आप ना बॉडी Sorry ना sir. मूव किया Sorry करें. sir. हाँ Sorry sir. देखें, हाँ मुझे ना, मैं आपको पता नहीं अपने, देखें, दिस इज नॉट माई पार्ट टाइम बिजनेस, दिस इज नॉट माई फुल टाइम बिजनेस, दिस इज नॉट माई लाइफ, दिस इज माई रिलीजन. और मैं अपने रिलीजन में इंतहाई सेंसिटिव हूँ. मेरा रिलीजन है, टीचिंग इज माई रिलीजन. आप समझ रहे हो कि शायद मेरा पैसा रिलीजन है. पैसा मैं सारा डोनेट कर देता हूँ बाई दी वे, मैं आपको बता दूँ. मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता. मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा, पैसा मैं सारा डोनेट कर देता हूँ. आई लिव इन अ वेरी 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 स्मॉल बेसमेंट, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता. और पिछले 22 साल से रह रहा हूँ. और पूरी जवानी 32 साल से लेके 52 साल 53 साल तक आई लिव इन द स्मॉल बेसमेंट. अब मैं बुढ़े बारे क्या, मैं कस्टम मेड हाउस में जाऊंगा? अपनी भरी जवानी जब लड़के अय्याशियां कर रहे होते थे, तो तब भी आई यूज टू लिव इन अ बेसमेंट. तो ये दिस इज माई रिलीजन. ऑनेस्टली, मैं आपको, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं जब आप लोग मुझे फीस देते हैं ना, मुझे पता क्या लगता है, मैं दिल की गहराइयों से बताऊं, मैं आपको, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं. आई विल शो. पॉइंट ये कि अब आप कहेंगे कि खैर बात आगे निकल जाएगी. मैं नहीं कुछ अपने पास रखता. आई लिव इन अ वेरी स्मॉल बेसमेंट. ठीक है, मेरे मेरे ऑर्फन हाउस हैं पाकिस्तान में, मेरा लंगर खाना है पाकिस्तान में, मेरा इंडिया में कोविड हॉस्पिटल है, चैरिटी चैरिटी हॉस्पिटल. मेरे इधर भी बड़ी हैवी किस्म की चैरिटी जाती है. तो सारा मैं चैरिटी ऑन रिकॉर्ड है. और मैं कहीं पे भी पब्लिसिटी नहीं करता, अदर देन माई स्टूडेंट, अदर देन माई स्टूडेंट. वो इसलिए स्टूडेंट्स को करता हूँ, जब वो मुझे फीस देते हैं ना, अब यकीन करो, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी माँ का सौदा करके, मैं अपने रिलीजन को बेच के पैसे कमा रहा हूँ. तो ये एक इंतहाई थर्ड क्लास मुझे एक्ट लगता है. लेकिन मेरी मजबूरी क्या है? मेरी मजबूरी है कि मुझे पता है मेरी दुनिया के लोग भूखे सोते हैं. आज मेरा रब मुझे आके कह दे ना, इस दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता, तो जो आप लोगों से पैसे ले उस पर अल्लाह की लानत. अगर मेरी नीयत भी गलत है ना, तो मेरे पे अभी लानत पड़ जाए. इससे बढ़ के मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है. आपको एक छोटी सी, अब ये ना समझना कि मुझे शौकियां मारनी हो ना, शौकियों के लिए मेरे पास तो बड़ी चीज़ है. मैं भी लैम्बोर्गिनी, फरारी, तो जनाब कस्टम मेड हाउस. मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखानी पड़ती है. ये ना समझना कि मैं इसलिए दिखाता हूँ सिर्फ ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स, ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स. एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखें, छोटी सी एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ, छोटी सी, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. मैं आपको हर क्लास में अक्सर ही दिखाता रहता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ. ये देखें, एक सेकेंड, जस्ट फॉर 1 सेकेंड. मुझे एक सेकेंड, ये शक्ल तो मेरी है ना, कोविड से पहले, देख रहे हैं ना ये कितनी डोनेशन दी हुई है? कैन यू रीड निधि? Yeah, 140,000. रुपीज? No, 140,000. रुपीज? बेटा कनाडा में दिए तो डॉलर में ही दिए होगे ना. कॉमन सेंस तो इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है क्या नहीं? Yeah, it's a dollar. हाँ, ठीक है ना. और कोई मैंने प्लेट नहीं लगवाई वहां पे कि मेरी प्लेट लिखो, ये करो वो करो.
ठीक है। और मैं यकीन करो, पॉइंट मेरा यह है कि आप ये ना समझना कि मैं आप लोगों के पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। पैसा तो आप इंडिया से जितने मेरे पास पैसे आते हैं, कुमाक्षी विटनेस है, मैं कहता हूँ वहीं पे जाके दे आओ। पाकिस्तान से जितने पैसे आते हैं, मैं कहता हूँ वहां पे जाके खुद ही अपने हाथ से दे आओ। अगर कनाडा में भी आप मुझे नहीं देना चाहते, मैं आपको खुद ही कह दूंगा यार ये है, मेरा फूड बैंक भी है, मुझे उनको करना होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, ये भी एक छोटा सा चीज है, ये देखो, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो। देर आर 3 सेनेटर नीना टेंगड़ी और एक और तो नहीं। ये तीनों सेनेटर हैं, ये नीना टेंगड़ी और दूसरी सलमा पाउला, इज माई ब्रदर। Side. So we don't care about anything, right? So love for all, hatred for none. Thank you very much. So thank you very much, Chaudhry family. Thank you, other donors. Thank you, Mrs. Saga, for helping us for donating 140,000 this year in 2021. 2021 in COVID time. ठीक है। फिर आप ये इंडिया में ये पढ़ दें थोड़ा सा यार, आपको नाराज ना होना, ये ना समझना कि मैं है अपना है, एक्सक्यूज मी, हाँ नाराज ना होना। ये क्या रिद्धि, कैन यू पढ़ रहा है जरा Sir, जल्दी। Aamer Chaudhry, our teacher and mentor, who not only help us to become barrister solicitor, but also a good human. His moral teaching are far valuable than any career achievement, financial success. As always, he stands for his students, community, society. This time again, in this time of extreme crisis in India, he continued his help for needy people. He sent help to various NGOs in India, oxygen for 200 cylinder, food, medicine, help to needy people in this अब ये देखो, difficult इंडिया time. इंडिया इज नॉट माई कंट्री, इंडिया इज नॉट माई कंट्री, ठीक है। लेकिन इंडिया से मुझे पैसे तो जनरेट होते हैं। ये देखो, ये तस्वीरें, ये इंडिया के ये हॉस्पिटल की तस्वीरें, ठीक है। और भी बड़ा कुछ है, मतलब पॉइंट मेरा ये है, ये देखो, 1 सेकेंड। आप देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं ये यतीम खाने के हैं। इनको इस यतीम खाने की तमाम माली सपोर्ट चौधरी आमर साहब, ठीक है, ये एक यतीम खाना है, ठीक है। ये दूसरा NCA एग्जाम गुरु चौधरी आमर साहब की तरफ से इस यतीम खाने के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। 250 बच्चा एक एक यतीम खाने में, 3 टाइम का स्टाफ। फिर ये देखो, लास्ट मैं दिखाऊंगा बस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, NCA एग्जाम गुरु जनाब चौधरी आमिर साहब की तरफ से इलाका कसूर में गायें और भैंसें लेकर दी गई हैं, जिनका तमाम दूध गुरबा, यतीमों और ठीक है। अब ये अब सिर्फ आपको ये देखो, फिर ये देखें पकड़ती हैं, ठीक है, ये देखें। फिर लास्ट वन दिखा देता हूँ आपको, ये कि 1 सेकेंड, लास्ट 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 और भी बड़ा कुछ है। खैर मैं ये इनिशियली आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इसको कभी गलत मतलब ना लेना। ये देखो, ये तंदूर, ठीक है। तो आप सारों के पैसे यहाँ पे जाते हैं, तो लिहाजा मुझे आपके पैसों की 0% भी टेंशन नहीं है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मेरा तो थंब रूल है भाई, कि ये करोगे तो कर, यू गोना पास, यू विल नॉट गोना डू इट। अभी हमने गुरु जी से ये चीज सीखी है। गुरु जी ने ऐसे ही लंगर खोला था ना 20 टके से, तो ये वहां से सीखी है। किसी की अच्छी क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करो, चाहे वो आप कोई है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, काला है, गोरा है, पीला है। अभी ये बेसिक चीजें मैंने आपको दिखाई है। पॉइंट ये है कि मुझे आप लोगों के पैसों का ना 0.1% भी नहीं। अगर इफ यू थिंक इफ आई एम गोना डाई टुडे, आई विल बी वेरी सेटिस्फाई। मैं अपने गॉड के पास जाके कहूंगा यार इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, तो मैंने सेटिस्फाई किए पैसे। अगर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करके जनाब पैसे पैसे दे दो, पैसे दे दो, हु गिव्स अ डैम यार, बिल्कुल आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी एजुकेशन चाहिए। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट।
तो लिहाजा ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मुझे लिटरली मैं अपनी, आई लव माई मोम। मैं अब खैर क्या बताऊँ, मैं अपनी माँ के 1.5 साल पहले डेथ हुई है, ठीक है। उनके अंडरवियर भी चेंज करता था, डायपर, पॉटियाँ भी मैं साफ करता था, नहलाता भी था, जबकि 4 फ्री नर्सेज मिली हुई थी हॉस्पिटल की तरफ से, फ्री। तो मैं 4 ना सर्जन ला सकता हूँ, 4 ना FRCS डॉक्टर ला सकता हूँ, और मुझे करना कुछ ना पड़े, इतनी मेरी इनकम है। तो पॉइंट ये है कि मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ वैसे, ये बताने का पर्पस क्या था? सर क्योंकि मैंने इंटरप्ट कर दिया था बीच में, आप निधि से पूछ रहे थे। ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्योंकि समटाइम मैं आउट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार, मंजिल की जस्तजू में क्यों खो रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। हम सबको वी हैव टू गो टू द टॉप। मैं आज की डेट में बता दूं, विद इन 3 to 5 years वी हैव टू बी अ रिटायर, रिटायरमेंट का ऐलान कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं, कितने लॉ फर्म है ब्रैम्पटन में, मेरे स्टूडेंट है, विद इन 3 to 5 years आफ्टर डन देयर लॉस, इवन फ्रॉम नाउ 3 to 5 years रिटायरमेंट। इमिग्रेशन लॉ इज वर्किंग फॉर मी, रियल एस्टेट लॉ इज वर्किंग फॉर मी, रियल एस्टेट क्लर्क इज वर्किंग फॉर मी। देर आर, आई नीड योर आई कॉन्टेक्ट, आई नीड, देखो, यू आर मेकिंग $5,000 नॉन लॉयर, जीरो, ये फर्स्ट लेवल, you are making $5,000 with non-lawyer. Once you will become a lawyer, then you are working with CIBC company, Royal Bank, or working for someone as a lawyer, making $5,000. This $5,000 is much, much, much better than first one. Then next level, third level, sole practitioner. If you are making $5,000, same time you are making $5,000 goodwill. गुडविल, आपने आज 5,000 कमाया, 5,000 की गुडविल बनाई। मेरा जितना बिजनेस है 85% गुडविल की बेस पे चल रहा है। सारी दुनिया ने रोक दिया कि किसी तरीके से इस बंदे को ठप करा दिया जाए, किसी भी तरीके से ठप करा दिया जाए एनसीए एग्जाम गुरु। दुनिया ने, वो सुने ना। तो पॉइंट ये है कि थर्ड एंड विच इज अ स्टेज, फोर्थ स्टेज, डजंट मैटर आई एम मेकिंग $5,000 बट डूइंग नथिंग, जीरो। आप मेरे लिए काम कर रहे हैं पर मैं घर बैठ के 5,000 कमा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट का ऐलान। तो वी हैव टू डू, नो मैटर व्हाट। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो रात की तन्हाई में कि दिन में आपका नाम बचे। सॉरी पिंटो, अदर देन एजुकेशन आई एम टॉकिंग, अदर देन एजुकेशन इट्स अ मोटिवेशनल स्पीच। मैंने अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस है, अगर मेरे जैसा 2 टगे का बंदा यार, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूं आज भी, मैं पैरा लीगल का क्लर्क बनने के काबिल नहीं हूं, लेकिन अपनी फील्ड में पक्का हो गया। मेरा एक छोटा सा बबल है, उस बबल में मैं इतना सॉलिड हो गया हूं, अदर देन बबल आई एम जीरो। ठीक है, हमें अपने जोश खरोच, राइट अनुराधा, निधि, राइट? Yes. ओके, आई नीड आई कॉन्टैक्ट, कंप्यूटर गाइस, आई नीड आई कॉन्टैक्ट। आई यू लर्निंग, राइट? बोर तो नहीं हो गए? हाँ, मेरी किसी बड़ियां गल्लां होंदियां ने, पर यार की करिए, मतलब दसना पैंदा है। हाँ, अब ये देखें, ये शौकियों का मैटर। यार मैं शौकियों के लिए अपना बड़ा घर ना बनाऊं, लैम्बोर्गिनी ना खरीदा, फरारी ना खरीदूं, मैं भी यहाँ पे ये राडो की घड़ी ना खरीदूं, या मेरे भी नेकलेस हो, सोने की चेनें ना हो, हैं कि नहीं। पॉइंट है कि ये बात इज नॉट मैटर ऑफ शौकियां। मैं तो अपने स्टूडेंट्स हैं, यू पीपल आर माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं आपसे पैसे मांगता हूँ ना। मैं अपनी माँ, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी माँ को बेच के आपसे लोगों से पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने रिलीजन को बेच के पैसे कमा रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि यार, जब करते हैं गुरुद्वारे में देते हैं मुफ्त की रोटी, आप कहते हैं सिख हो जा, नहीं ना कहते, कहता है भाई जो मर्जी खाए। पॉइंट, या हिंदू करते हैं या मुसलमान करते हैं, तो कोई ये थोड़ा पैसे दे दे के, या जो पैसे दे के या जबरन करते तो गलत ही करते हैं ना, किए हुए हैं। पॉइंट ये है कि अपने, बी अ ब्रांड नेम, बी अ ब्रांड नेम इंस्टेड ऑफ रन आफ्टर द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बनो। इफ यू गोना रन आफ्टर मनी, मनी गोना रन अहेड ऑफ मी। इफ यू गोना रन आफ्टर पैशन, मनी गोना रन आफ्टर यू। और अपने ऊपर ब्रांड नेम बनो, ब्रांड नेम। एनीवे, topic was room number 3:30 we gonna finish. Next class again gonna be intro.
इन नेक्स्ट क्लास वी कैन सॉल्व वन क्वेश्चन एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, ये देखें, नेक्स्ट क्लास वी कैन सॉल्व वन सैंपल क्वेश्चन। कैन यू सी दिस इज सैंपल क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ लॉ सोसाइटी ऑफ कनाडा नेशनल कमिटी ऑन एक्रीडिटेशन सैंपल एग्जाम, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, all question in my regular class, all question 1, okay, question 2, but we're gonna solve question 3 in next class under the Alberta Dentistry Act. We're gonna solve this question 1:30 to 3:30, that gonna be a free class, ठीक है? Make sense? On तो the next same day, class sir? 1:30 to 3 है? On the same day, like on Saturday Yeah, only? same day same time, same day same time. See Okay. Because charter of today I missed common it. है? आज मैंने मिस कर दी क्योंकि मेरी बेटी सोई नहीं थी. Now she is sleeping. Now I have started. मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। मैंने 1 घंटा आपकी लेट क्लास स्टार्ट की क्योंकि मेरी So अब is बेटी सोई recording is नहीं. available. Recording gonna be available. So Okay, judge will fine. follow. Recording will be available. Judge will follow all 5 steps. Okay. Then room number 2. Then he gonna go to room number 3. So how much procedure fairness is required? So I will explain in next class how much procedure fairness is required. So this is, of course, Knight or Baker certain steps. I will explain in next class. Number 3. Then number 4. Again, we're gonna come to the point. First, room number 1 is done. Room number 2 is done. Then we're gonna go to next class, room number 3. Then directly room number 4. Step number 4. If any issue in the given scenario, if right to counsel issue, then right to counsel. Directly come to the point, right to counsel issue. Then final decision is right here. That's it. Procedure is done. ठीक है? So next class, okay. Again, I'm telling you over and over. यार पीयूष भाई देखो, again I'm telling you, we are NCA. To clear any NCA exam, we have to spend 100 hours with fully actress and mens rea. Actress mean you are physically present. Whether your mens rea is also fully present. अगर आपका मेंस rea, if you are लेट बंदे, if you are लेट, हैबिचुअल लेट होते हैं बाज लोग, आदत होती है लेट होने की. If you are late, result don't expect this time gonna be good. मेरा थंब रूल है आपको, मैं आपको बता दूं, always punctuality is the top priority, especially in my, if you are late, even in barrister solicitor you are late, 100% गारंटी का कभी भी पास नहीं कर सकते. थंब रूल है. तो बेटर यही कि अभी क्विट कर दें. आपको थिंक लाइक अ लॉयर, एक्ट लाइक अ लॉयर, बिहेव लाइक अ लॉयर. अपनी मेच्योरिटी लेवल को ना उस लेवल पे अभी से, वही है कि अगर तू रुतबा चाहता है, मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है. अपने अंदर जोश पैदा करो. नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे. डोंट बी क्रो, क्रो वाह 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 है. लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं क्या लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ. डोंट बी क्रो, बी अ ईगल. नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू ईगल है, तू ईगल है. बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, जहां पे चुप करके बैठे रहो. ये नहीं कि उसने मुझे कुत्ता कहा, यार उसने मुझे कुत्ता कहा तो मैं कुत्ता बन गया. आई मीन मेरी फैमिली में इतने इतने बड़े, अब मैं क्या बोलूं, लोग, छोटे लोग मेरी आवाजें रिकॉर्ड करके आगे फेसबुक पे डाल देते हैं. ठीक है ना, मुझे आई डोंट इवन गिव अ डैम. मैं एक हाथी, बी अ एलिफेंट, बी अ एलिफेंट. एलिफेंट वॉक्स इन जंगल, dogs always barking at elephant pace, elephant on elephant. Elephant pace doesn't affect by the barking of the dog. Be a elephant in your life, be a eagle, be a lion. एटीट्यूड. सारा दिन मैं वेला बैठा रहता हूँ, सारा दिन सुता रहता हूँ. लोग मुझे ड्रंक समझते हैं. ऑनेस्टली बड़े लोग, यार ड्रंक, शक्ल देखो मेरी, ठीक है, ड्रंक लगता हूँ. लेकिन जब मैं क्लास में आता हूँ मेरी आंखें नहीं देखते कि दिल करता फाड़ के रख दूं सारों को. 3 घंटे पढ़ो,
होके पढ़ो यार, दुनिया को पता चले यार। 3 hours our study is much 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 better than 12 hours study, अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो। Again, 3:30 I'm gonna finish my class. I need your eye contact. It will continue in next free session. Again, it's gonna be a free session. Again, in free session, I'm gonna solve one question. Again, I need your eye contact. My name is Aamer Chaudhry. My name is Aamer Chaudhry. Example. Example is uh, I'm sleeping. Okay, I'm sleeping in a hospital. I'm sleeping in hospital. Supervisor came to my office. Whenever supervisor gonna come to my office, okay, supervisor came to my office. He wake me up. Oh, Mr. Chaudhary, you are sleeping while job. Yes, of course, he has two options. Forgive. If forgive, matter is over. फिर तो गाली खत्म हो गई. Otherwise, he gonna make a report, investigation report. Investigation report, he gonna give me investigation report. Oh, at this time he was sleeping. There are 3 witnesses. One report he gonna give it to me. One report he gonna submit to his supervisor. Then supervisor gonna talk to me or whatever. Finally, board gonna send me a notice. In the notice, same information in the notice. Oh, in the notice, oh, supervisor, at this date, at this time, Amir was caught while sleeping. There are 3 witnesses. Nidhi, I need your eye contact. Yes. आप उधर क्या देख रही हैं? उधर कौन है? सर मेरे बच्चे हैं। अच्छा, चलें, ये तो ठीक है। मेरी बहन कहती है तेरे बच्चे नहीं तो तू एम ही बोली जाता है। तो मैं बहुत बार बस, बोल चुकी हूँ यहाँ से जाओ, बट वो हट नहीं रहे। नहीं कोई मसला नहीं है, सॉरी यार। वैसे मेरा एक बेटा है, डिवोर्स हुई हुई है, लेकिन वो नाम देखो, यू आर मेकिंग $5,000 नॉन लॉयर, जीरो, ये फर्स्ट लेवल। यू आर मेकिंग $5,000 विद नॉन लॉयर. Once you will become a lawyer, then you are working with CIBC company, Royal Bank, or working for someone as a lawyer, making $5,000. This $5,000 is much, much, much better than first one. Then next level, third level, sole practitioner. If you are making $5,000, same time you are making $5,000 goodwill. Goodwill. आपने आज 5,000 कमाया, 5,000 की गुडविल बनाई. मेरा जितना बिजनेस है 85% गुडविल की बेस पे चल रहा है. सारी दुनिया ने रोक दिया कि किसी तरीके से इस बंदे को ठप करा दिया जाए, किसी भी तरीके से ठप करा दिया जाए एनसीए एग्जाम गुरु. दुनिया ने वो सुने ना. तो पॉइंट ये है कि थर्ड एंड विच इज अ फोर्थ स्टेज डजंट मैटर. आई एम मेकिंग $5,000 बट डूइंग नथिंग, जीरो. आप मेरे लिए काम कर रहे हैं पर मैं घर बैठ के 5,000 कमा रहा हूं. दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट का ऐलान. तो वी हैव टू डू नो मैटर व्हाट. इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो रात की तन्हाई में कि दिन में आपका नाम बचे. सॉरी पिंटो, अदर देन एजुकेशन आई एम टॉकिंग, अदर देन एजुकेशन इट्स अ मोटिवेशनल स्पीच. मैंने अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस है. अगर मेरे जैसा दो टगे का बंदा यार, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूं आज भी मैं पैरा लीगल का क्लर्क बनने के काबिल नहीं हूं, लेकिन अपनी फील्ड में पक्का हो गया. मेरा एक छोटा सा बबल है, उस बबल में मैं इतना सॉलिड हो गया हूं. अदर देन बबल आई एम जीरो. ठीक है. हमें अपने जोश खरोच, राइट अनुराधा, निधि, राइट. Yes. Okay, I need your eye contact. Computer guys, I need your eye contact. Are you learning, right? बोर तो नहीं हो गए? हाँ, मेरी किसी बड़ियां गल्लां होंदियां ने, पर यार की करिए, मतलब दसना पैंदा है. हाँ, अब ये देखें, ये शौकियों का मैटर. यार मैं शौकियों के लिए अपना बड़ा घर ना बनाऊं, लैम्बोर्गिनी ना खरीदा, फरारी ना खरीदूं, मैं भी यहाँ पे ये राडो की घड़ी ना खरीदूं, या मेरे भी नेकलेस हो, सोने की चेनें ना हो, हैं कि नहीं. पॉइंट है कि ये बात इज नॉट मैटर ऑफ शोखियां. मैं तो अपने स्टूडेंट्स हैं, यू पीपल आर माई चिल्ड्रन. मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं आपसे पैसे मांगता हूँ ना. मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी माँ को बेच के आपसे लोगों से पैसे कमा रहा हूँ. मैं अपने रिलीजन को बेच के पैसे कमा रहा हूँ. जब आप कहते हैं कि यार, जब करते हैं गुरुद्वारे में देते हैं मुफ्त की रोटी, आप कहते हैं सिख हो जा.
नहीं ना कहते, कहता भाई जो मर्जी खाए। पॉइंट या हिंदू करते हैं या मुसलमान करते हैं, तो कोई ये थोड़ा पैसे दे दे के, या जो पैसे दे के या जबरन करते तो गलत ही करते हैं ना, किए हुए हैं। पॉइंट ये है कि अपने बी अ ब्रांड नेम, बी अ ब्रांड नेम इंस्टेड ऑफ रन आफ्टर द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बनो। इफ यू गोना रन आफ्टर मनी, मनी गोना रन अहेड ऑफ मी। इफ यू गोना रन आफ्टर पैशन, मनी गोना रन आफ्टर यू। और अपने ऊपर ब्रांड नेम बनो, ब्रांड नेम। एनीवे, topic was room number 3:30 we gonna finish. Next class again gonna be intro. In next class we gonna solve one question. Example, देखो next class में आपको बताता हूँ, ये देखें, next class we gonna solve one sample question. Can you see? This is sample question. Federation of Law Society of Canada National Committee on Accreditation sample. Example, we gonna solve this question. All question in my regular class, all question. Question 1, okay. Question 2, but we're gonna solve question 3 in next class. Under the Alberta Dentistry Act, we're gonna solve this question. 1:30 to 3:30, that gonna be a free class. ठीक है? Make sense? On तो the next same day, class sir? 1:30 to 3, है? On the same day, like on Saturday Yeah, only? same day, same time, same day, same time. See, Okay. Because Charter of today I missed Common it. है? आज मैंने मिस कर दी क्योंकि मेरी बेटी सोई नहीं थी. Now she is sleeping. Now I have started. मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। मैंने 1 घंटा आपकी लेट क्लास स्टार्ट की क्योंकि मेरी तो अब इस बेटी सोई. recording is available. Recording gonna be available. So Okay, judge will fine. follow, recording will be available. Judge will follow all 5 steps. Okay. Then room number 2, then he gonna go to room number 3. So how much procedure fairness is required? So I will explain in next class how much procedure fairness is required. So this is, of course, Knight or Baker, certain steps. I will explain in next class. Number 3, then number 4, again we're gonna come to the point. First, room number 1 is done. Room number 2 is done. Then we're gonna go to next class, room number 3. Then directly room number 4. Step number 4. If any issue in the given scenario, if right to counsel issue, then right to counsel. Directly come to the point, right to counsel issue. Then final decision is right here. That's it. Procedure is done. ठीक है? So next class, okay. Again, I'm telling you over and over. यार पीयूष भाई, देखो, again I'm telling you, we are NCA. NCA. To clear any NCA exam, we have to spend 100 hours with fully actressia and mensrea. Actressia means you are physically present. Whether your mensrea is also fully present. अगर आपका मेंसरिया, इफ यू आर लेट, लेट बंदे, इफ यू आर लेट, हैबिचुअल लेट होते हैं बाज लोग, आदत होती है लेट होने की। इफ यू आर लेट, रिजल्ट डोंट एक्सपेक्ट दिस टाइम गोना बी गुड। मेरा थंब रूल है, आपको मैं आपको बता दूं, always punctuality is the top priority, especially in my, if you are late, even in barrister solicitor you are late, 100% गारंटी का कभी भी पास नहीं कर सकते। थंब रूल है। तो बेटर यही कि अभी क्विट कर दें। आपको थिंक लाइक अ लॉयर, एक्ट लाइक अ लॉयर, बिहेव लाइक अ लॉयर। अपनी मेच्योरिटी लेवल को ना उस लेवल पे अभी से, वही है कि अगर तू रुतबा चाहता है, मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। अपने अंदर जोश पैदा करो। नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, डोंट बी क्रो, क्रो क्रो, वाह 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 है। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं क्या लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। डोंट बी क्रो, बी अ ईगल। नहीं है तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू ईगल है, तू ईगल है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, जहां पे चुप करके बैठे रहो। ये नहीं कि उसने मुझे कुत्ता कहा, यार उसने मुझे कुत्ता कहा तो मैं कुत्ता बन गया। आई मीन, मेरी फैमिली में इतने इतने बड़े, अब मैं क्या बोलूं, लोग, छोटे लोग मेरी आवाजें रिकॉर्ड करके आगे फेसबुक पे डाल देते हैं। ठीक है ना, मुझे आई डोंट इवन गिव अ डैम। मैं एक हाथी, बी अ एलिफेंट,
Be a elephant. Elephant walks in jungle. Dogs always barking at elephant pace. Elephant on elephant. Elephant pace doesn't affect by the barking of the dog. Be a elephant in your life. Be a eagle. Be a lion. Attitude, attitude, attitude. सारा दिन मैं वेला बैठा रहता हूँ, सारा दिन सुता रहता हूँ, लोग मुझे ड्रंक समझते हैं। ऑनेस्टली बड़े लोग, यार ड्रंक, शक्ल देखो मेरी, ठीक है, ड्रंक लगता हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में आता हूँ मेरी आंखें नहीं देखते कि दिल करता है फाड़ के रख दूं सारों को। 3 घंटे पढ़ो, ठोक के पढ़ो यार, दुनिया को पता चले यार। 3 hours our study is much 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 better than 12 hours study अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो। Again, 3:30 I'm gonna finish my class. I need your eye contact. It will continue in next free session. Again, it's gonna be a free session. Again, in free session, I'm gonna solve one question. Again, I need your eye contact. My name is Aamer Chaudhry. My name is Aamer Chaudhry. Example. Example is uh, I'm sleeping. Okay, I'm sleeping in a hospital. I'm sleeping in hospital. Supervisor came to my office. Whenever supervisor gonna come to my office, okay, supervisor came to my office. He wake me up. Oh, Mr. Chaudhry, you are sleeping while job. Yes, of course. He has two options. Forgive. If forgive, matter is over. फिर तो गाली खत्म हो गई. Otherwise, he gonna make a report, investigation report. Investigation report, he gonna give me investigation report. Oh, at this time he was sleeping, there are 3 witnesses. One report he gonna give it to me, one report he gonna submit to his supervisor, then supervisor gonna talk to me or whatever. Finally board gonna send me a notice. In the notice, same information in the notice. Oh, in the notice, oh, supervisor, at this date, at this time, Amir was caught while sleeping. There are 3 witnesses. Nidhi, I need your eye contact. Yes. आप उधर क्या देख रही हैं? उधर कौन है? सर मेरे बच्चे हैं। अच्छा, चलें, ये तो ठीक है। मेरी बहन कहती है तेरे बच्चे नहीं तो तू एम ही बोली जाता है। तो मैं बहुत बार बस, बोल चुकी हूँ यहाँ से जाओ, बट वो हट नहीं रहे। नहीं कोई मसला नहीं है, सॉरी यार। वैसे मेरा एक बेटा है, डिवोर्स हुई हुई है, लेकिन वो नाम नहीं किया। यार इतने अफसोस की बात है, मेरा एक अपना बेटा है कि मैं उसके लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सका। कहाँ, मैं हजार बंदे बच्चे मेरे डेली बेसिस पे मेरे से, मेरे यतीम खानों में मेरे कर रहे हैं, और अपने बेटे के लिए मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सका। कैसा है? समंदर सामने है और एक बूंद प्यास है ना। एक वो नसीरुद्दीन शाह की एक मूवी थी, तो उसने ना किसी को बचा लिया था, उसका भतीजा आया था, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था इन द मूवी, ठीक है। तो नसीरुद्दीन शाह ने अपने भतीजे को ना मार दिए गोलियां, ठीक है, इन इंग्लैंड। पिक्चर वाज इन इंग्लैंड, तो उसको अवार्ड मिल रहा था। तो कहता है कि आपने, अब गोरे उसको अवार्ड दे रहे हैं इन द मूवी, कहता है आपने पता है 1 लाख बंदों की जान बचाई है। कहता है काश 1 लाख एक बंदे की जान बचा सकता। वो एक कौन था? उसका बेटा। सोचो यार, अपना बेटा, हो सकता है उसकी कल को शादी हो, मुझे शादी भी ना बुलाए, हो सकता है वो मुझे बाहर देखे मेरे मुंह पे थूक फेंक के चला जाए। सोचो। लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जिगरा पैदा करो, ठीक है, हो जाता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में ना दिल की जगह ना जिगर होना चाहिए, जिगर, ठीक है। अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी करो, अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से मैक्सिमम। एक डिवोर्स हुई, हमारे मुल्कों में डिवोर्स होती है, फिर कहते हैं बंदे ਨੂੰ मार दो, ये कर दो, नफरतें फैला देते हैं। और यार अगर डिवोर्स हुई है, क्यों नफरत फैलाते हो यार? आखिर मैं उसका बाप हूँ यार, कितना बुरा हूँ? ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना क्लबों में जाता हूँ, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, सिंपल लाइफ गुजार रहा हूँ। आप नफरत फैला रहे हो, ठीक है यार, तेरा मेरी लड़ाई है। इतनी तमीज नहीं है कि यार बच्चे पे तुम नफरत, पैदा होते साथ ही नफरत सिखा रहे हो। जो बंदा अपने बाप से नफरत करेगा तो वो आगे क्या मोहब्बत फैलाएगा? एक बात याद रखना, हस्बैंड और वाइफ अव्वल तो लड़ो ना, लड़ो तो बच्चे के सामने ना लड़ो। नेवर एवर फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। ये एक देसी देसी टोटके हैं। जितनी मर्जी इख्तलाफ, और कभी भी अगर डिवोर्स हो भी गई है ना, बच्चे को कभी ना नफरत फैलाओ अपने बाप के या अपनी माँ के गिर्द, कभी ना करो यार, है ना। एनीवे, माय नेम इज आमिर चौधरी। ओके, देन व्हाट हैपन?
hospital board give me a notice. In the notice, hospital board give me a notice. Notice, in the notice, notice is done, discovery is done, delay, sufficient delay, notice received, and the hearing date in the admin body. Then in the admin body, right to cross-examine, right to counsel, right to cross-examine to all witness, hearing has to be open, admissibility of evidence. Maybe you are biased, maybe you are not biased. Then final, I'm sitting in my home, open envelope, Mr. Chaudhry was fired from the job. These are fact pattern you're gonna see in the exam. Then Mr. Chaudhry was fired from the job. Then he step out, came to your office. You people are administrative lawyer. You have to write a memorandum for this nice topic. Now, back of the mind, now exam start. In the exam start, judge, defense lawyer, behalf of Chaudhry, who is this guy? Hospital board. So first step. So when assessing the judicial review, first 5 preliminary questions must be met. I am unhappy with the decision of the admin body because admin body did not follow the proper procedure. Now court will ask, court have their own protocol, own procedure. First step is, first step. Admin body, hospital is the admin body, dot. Doctor have a standing because he is directly affected by the decision of the admin body. The superior court, provincial court, okay, no issue with deadline. Decision is mature or immature. If decision is immature, judicial review is rejected. If decision is mature, then we're gonna go to next step. Next step is judge gonna say, what exactly, Mr. Chaudhry, they did not follow the proper procedure. I'm gonna say a right to counsel. When I brought right to counsel, they stopped me. Right to counsel, right? Right to counsel. Then judge gonna say, under the act, under the subordinate legislation, under the policy and guideline, they have a discretionary power. So we cannot bound to admin body must provide right to counsel because they have a discretionary power. They will not. Now, under the common law will not apply. Common law will not, judge will not gonna intervene. Common law rule does not apply to if decision of the admin body is legislative or emergency. Emergency mean emergency, COVID situation. But in the given scenario, this decision of the admin body, Mr. Chaudhry was fired, not legislative nor emergency. Is a particular decision. So common law will intervene. Second room, then judge will protocol. Third room, in next class, I'm gonna teach third room. With the third room, we're gonna solve 2 questions. First question and second question. We're gonna solve 2 questions. और आपने ना इसको प्यार से करना है यार, प्यार से करना है यार. आई कैन अंडरस्टैंड कि यार 3:30 I'm gonna finish 3:30. पॉइंट ये है कि यार देखो, पॉइंट ये है कि मेरे जैसा 2 टके का बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी फील्ड में ना पक्के हो जाओ, अपने आप को ना आइसोलेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड. नेक्स्ट जस्ट 5 मिनट आइसोलेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड. आइसोलेटेड कर दो अपने आप को यार, इतना आइसोलेटेड कर दो यार. मैंने आपको थप्पड़ मारा, इट्स माय फॉल्ट. इफ यू गोना स्लैप ऑन माय फेस, स्टिल माय फॉल्ट. अपने काम से काम रखो. ये जो होता है ना महफिल में जाकर कहाँ है जी, नवाज शरीफ सच्चा, बेनजीर झूठी है, जरदारी झूठा है, ये कौन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, मोदी साहब गलत हैं जी, ओ सच्चा. ओ यार, ओ भाई मोदी सच्चा या झूठा, और उसने हमें क्या देना है यार? हु गिव्स अ डैम? बातें करने की जरूरत, अपने काम से काम रखो यार. अपने हर वक्त अपने बारे में सोचो. डोंट थिंक व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी. हु गिव्स अ डैम? मेरी नंद क्या सोच रही है, मेरी नंद ने ये कह दिया. ओ यार, नंद है कौन? वो कि सुप्रीम कोर्ट की जज लगी हुई है? अगर या सस ने कह दिया या सुसर तो मोस्टली नंद का झगड़े हैं. और मैं आप नंद का झगड़ा हुआ हूं. मेरी डिवोर्स थी नंद की वजह से, मेरी बहन की वजह से. ठीक है ना? आज तक वो नंद भाभी, हालांकि डिवोर्स हुए 25 साल हो गए थे, फिर भी नंद ही नहीं जानती भाई.
आज भी मेरे पे फोन आता है ना, आपकी बहन ने ये कर दिया, और मैं कहा बीबी तेरी मेरी डिवोर्स को हो गई, तेरी सेकंड डिवोर्स भी हो गई है, और फिर भी तू मेरी बहन का खेड़ा नहीं छड़ रही। सेकंड डिवोर्स भी हो गया, लिख कर कसमें रब दी कि आपकी बहन ने ये कर दिया, और मैं कहा तेरा मेरा रिलेशन क्या है, मैं बच्चे को जो भी सपोर्ट कर रहा हूँ, सो यू हैव नथिंग टू डू विद माई सिस्टर। आप अभी भी सेंसिटिव है अपनी बहन के बारे में। मैं कह लेता, पॉइंट ये है कि अपने काम से काम रखो यार, अपने आप को ना ये जेन में छोड़ दो कि व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। यार मेरी बेइज्जती हो गई, एक तो साड़ी ना बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है, इज्जत टगे दी नहीं हैगी, बेइज्जती होगी मेरी यार, उसने महफिल में चुप करके बैठा करो यार, महफिल में चुप करके बैठा करो, चुप करके बैठो और वहीं पे बोलो जहां पे आपके वर्ड्स की वैल्यू है। मैं क्लास में क्यों इतना बोलता हूँ, महफिल में नहीं मैं बोलता, अपने खानदान में पीपल आर पीएचडी, मेरा बड़ा भाई पीएचडी है, मेरी उसे 0% नहीं बनती, हेल्प मेरी बड़ी करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अपने काम से काम रखो। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पीएचडी करने से नहीं होता, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका अमारत से नहीं आता। इंटेलेक्चुअल लेवल ना लोगों का ना आजकल 5% लोग हैं जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, 95 96 97% लोगों ना, भावें यू आर बिलियनियर, यू आर एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल लेवल देखो ना इन्ना जाही है, जो बोलते ना बंदा कहता यार लेवल देखो, तो आज का 95% लोगों के हालात हैं। तो अपने काम से काम रखो, हर वक्त अपने बारे में थिंक करो, ऑल द टाइम इंप्रूव योर सेल्फ, improve your, what is the best answer, never ever, if you got frustration, frustration is very 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 important in your life, frustration, take a frustration from husband, take a frustration from sas, take a frustration from employer, take a frustration on the traffic, लोग हार्न में जाके चले गंदा जा इशारा करके चले जाते हैं, टेक अ फ्रस्ट्रेशन, नेवर एवर आंसर फ्रॉम द माउथ, टेक अ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी फ्रस्ट्रेशन दे रहा है ना अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन डालो, फिर उसको कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी, और उस एनर्जी को कहो तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे एक दिन मैं जवाब दूंगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा। फिर दैट एनर्जी पुट इनटू योर एजुकेशन। जब एक भी एग्जाम पास होता है ना, पैर 1 फुट ऊंचे हो जाते हैं, जब आपको सक्सेस मिलती है कि वन एग्जाम इज क्लियर, सेकंड एग्जाम इज क्लियर, ठीक है ना, तो जो सड़ने वाले होंगे ना वो इतना सड़ जाएंगे, तो आपने कहना हंस दे जाओ। पॉइंट ये है कि अपने काम से काम रखो यार। मुझे अफसोस ये होता है कि यार हम लोग अपनी कंट्रीज छोड़ के आए हैं, इंडिया पाकिस्तान कंट्री छोड़ के आए हैं, उधर हमने बड़ी यादें छोड़ के आए हैं यार, अपने माँ बाप चाचे ताए दादे गए, हमने उनको ग्रेव यार्ड में डाला हुआ है, हमारे बचपन की यादें हैं। वो एक जगजीत सिंह की है नहीं है, वो कश्ती, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बचपना है, खुशबू है, सारा कुछ यार। यहाँ पे कनाडा में आए हैं, किस लिए आए हैं? सिर्फ $5,000 कमाने के लिए। कुत्ते की तरह लाइफ हुई है, कुत्ते की तरह लाइफ है, तो बेटर नहीं है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने काम से काम रखो, गेट रिड ऑफ दिस, 5 10 हज़ार की खातिर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मैं कहता हूँ चाहे 5,000 कमाओ, हु हैज अ लग्जरी लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लग्जरी लाइफ, यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी, अपनी मर्जी से उठो, चाहे आप 5,000 कमाओ, आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए। हाउ? अगर तू रुतबा अब नेक्स्ट 3 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपना एक छोटा सा अंपायर खोल लो, छोटा सा लॉ चैम्बर, फैमिली लॉयर इज वर्किंग फॉर मी, इमिग्रेशन लॉयर इज वर्किंग फॉर मी, रियल एस्टेट लॉयर इज वर्किंग फॉर मी, क्लर्क इज वर्किंग फॉर मी, और लोगों ने खोले, मैं तो कह रहा हूं ना, और यू आर मेकिंग डजंट मैटर $10,000 बट डूइंग नथिंग। ये जीने का मजा तब है, विच इज अ फोर्थ स्टेज। तो इस स्टेज पे इंसान इजीली आ सकता है, लेकिन उसके लिए चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर फ्यूचर। इफ यू विल नॉट गोना चेंज योर एटीट्यूड, सारी जिंदगी स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल पे रह जाओगे। अपने आप को ना, अपने आप को आइसोलेटेड, मेरी फैमिली में लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है। मेरी परजाई, सकी परजाई ऐसी ऐसी बातें कर जाती है, ऐसे डेली बेसिस पे हम लोग तीर चलाते हैं एक दूसरे के दिल पे, तीर, मैं उनको मर्डर समझता हूँ। बातों में हम लोग तीर चलाते हैं, मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, वो उसकी कर रहा है, वो मेरी कर रही है, तंज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, फिर हम डे एंड नाइट सोचते रहते हैं। एक बात याद रखना, इफ यू वांट फ्लाई इन द लाइफ, इफ यू वांट फ्लाई इन द लाइफ, इफ यू वांट गो टू द फोर्थ लेवल, मैं आपको एक थंब रूल बता दूं,
देन क्लास को ना बी फिनिश। क्या बोला? अगर आपने ट्रेवल करना है ट्रेन पे, बस पे, गड्डी पे, दे विल नॉट गोना लुक एट योर वेट। कहते हैं जितना मर्जी वेट कैरी कर लो। इफ यू ना फ्लाई इन योर लाइफ, तो जहाज में जब आप सफर करते हैं क्या कहते हैं? नॉट मोर देन 20 kg, राइट? कहते हैं ना नॉट मोर देन, क्योंकि लेस वेट। सो इसी तरह लाइफ की भी कहानी ऐसी है। अगर आपने लाइफ में रिड़ना है और 2 4 5 10 हज़ार की खातिर बस यार पैसे आ जाए किसी तरीके से, यार एक दफा यार छुरा फेर दो, है ना? ऐसे ही होता है ना यार, बस किसी तरीके से पैसे कट दे ताकि मेरी दाढ़ थले आ जाए। यार इस एटीट्यूड के साथ टक्का आपने तरक्की करनी है। मैंने तो कभी आज तक किसी की मिन्नतें नहीं की। हाउ मच मनी आई एम मेकिंग यू कैन नॉट इवन थिंक इन योर ड्रीम। शायद अगले 100 साल तक का सोच भी नहीं सकते। जितनी मैं चैरिटी अल्लाह के हुक्म से करता हूँ ना, तो लोग आपके जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, उससे डबल से ज्यादा मैं चैरिटी कर देता हूँ। द पॉइंट है कि बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड करो। ये नहीं कि बस यार पैशन को फॉलो करो। अभी आपके बात बताते बताते आउट ही हो गया था, पता नहीं क्या बताने लगा था, क्या बताने लगा था। लगता है अब बातें बोरियत शुरू हो गई हैं, और कहते हैं जब आप बोरियत शुरू हो जाए ना, आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाए। नहीं, आप प्लेन का बता रहे थे, प्लेन। प्लेन का, हाँ देखा ना, ये अब यहाँ पे बोरियत कम होगी, जहाँ पे आप पता चले आपकी बातों की वैल्यू कम हो गई, उसी टाइम गिव अप कर दो। उधर ही बोलो जहाँ पे आपकी बातों की अगले रिस्पेक्ट करते हैं। जो फन करते हैं ना, तो चुप हो जाओ। मैं ये बता रहा था इसी तरह आपकी लाइफ है। हम जो लाइफ है हमने कैरी किया हुआ है ना, लोगों की बातों का बर्डन। चाचे ने क्या कहा, ताए ने क्या कहा, एक बोरी है उसके अंदर चाचे की बातें, ताए की बातें, सास की बातें, ससुर की बातें, नंद की बातें, एम्प्लॉयर की बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें, अदर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। 50,000 kg का वजन हमने उठाया हुआ है, और भाई उसके साथ आप रोड पे खड़े भी हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। एक काम करो, सिर्फ पता क्या करना है, क्या करना है? उस जो बैग को उठाया हुआ है ना, उसको सिर्फ छोड़ दो। एक दफा माइंड फ्री हो गया ना, माइंड, तो ऐसे शूट करोगे, यू हैव नो आइडिया। मेरे जैसा दो टगे का बंदा, जब मैंने एनसीए स्टार्ट किया था यार, ये मेरी डिक्शनरी है, एक सेकंड ये देखो, मेरे सके एक सेकंड, जस्ट जस्ट 2 मिनट, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? किल। मुझे किल का मतलब नहीं पता था। ये मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ सकता है, कत्ल करना, मार डालना, अगर कोई उर्दू में पढ़ सकता है। मुझे किल का मतलब नहीं पता था यार। एक सेकंड, सेंटेंस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस। और ये क्या उर्दू में देखो, फतवा, सजा, हुक्म, ए देखो उर्दू में, ये मेरा लेवल था। ये क्या लिखा हुआ है? सिमिलर। सिमिलर, एक जैसी कैफियत। मुझे सिमिलर का नहीं पता था यार। सिग्निफिकेंट। एक सेकंड, जस्ट और वन मोर, एक दो और चीजें दिखाता हूँ फिर फिनिश करेंगे यार, बस। तनु, एक सेकंड ठहर जाए। ये एक जस्ट 1 सेकंड, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो मेरा बेटा, ट्राइड। अच्छा नजर आ रहे हैं? ट्राइड है 10 है, देखो एक ही लिखा हुआ है, टेस्ट। और इसका उर्दू में कोई पढ़ सकता है? इम्तहान। है मेरा लेवल थी। अपोन, ये मेरी डिक्शनरी है, जब मैंने खोला था ये सारी मेरी डिक्शनरी है। ये सारे वर्ड बच्चों वाले, कच्ची पक्की वाले। सके भाई ने कहा था मैं डिग्रियों को आग लगा लूंगा, तो एक मैट्रिक का इम्तिहान पास कर रहा। तो आज ओ भरा, तो मैं 50,000 गुना आगे निकल गया। डिग्रियां देखी हैं उसकी, डिग्रियां गई भाड़ में, सब कुछ गया। और मतलब प्राउड फील करते हैं। वन ब्रदर ही हैज डन फर्स्ट, यस, वन ब्रदर ही हैज डन पीएचडी इन लॉ एंड टैक्सेशन। है नहीं, अग्गी लगी हुई है यार, वेला बैठे हुए हैं तो अग्गी है, फिजिकल थोड़ा होती है। घर बैठे हुए पढ़ाता है। पॉइंट मेरा ये है, अपने आप को एटीट्यूड को चेंज करो, सारी चीजें ठीक हो जाए। एक एग्रेशन लेके आओ। दो चीजें, रन आफ्टर, एक बात याद रखना, इफ यू आर डो ओके, खुद चलना सीखो अकेले। नेवर एवर टेक सिस्टम से फाइट ना करो। नेवर एवर, ओ यार सिस्टम इज बैड, यू आर रेसिस, आई एम रेसिस, ही इज रेसिस, सिस्टम इज बैड। तो सिस्टम इज बैड है तो कुड़ते रहोगे, नेगेटिव थॉट ना लेके आओ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना कुड़ोगे ना, उतना आपको ना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। गेट रिड ऑफ ऑल नेगेटिव थॉट्स। ऑनेस्टली हर बंदे की लाइफ में नेगेटिव थॉट आती हैं। कोशिश करो, जो बंदा नेगेटिव है ना, जिससे आपको बात करके तकलीफ होती है, उसका नंबर ही डिलीट कर दो।
ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। मुश्किल है, कोई आपका चचा ताया तो है नहीं, इवन कजन भी है ना, उसका नंबर यार जदों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। फर्स्ट टाइम मुश्किल पड़ेगी, उसके बगैर जीना सीखो। हाँ, देखो ना, गल ਇਹਨਾਂ ਨੇ दिल ਨੂੰ लगी है। आई नो, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजों को फेस किया है। तो अपनी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जाते जाते एक शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरी रजा ये है, मैंने वीक में 20 घंटे काम करना है। मेरी रजा ये है कि सैटरडे 1:30 to 3:30 आई एम गोना टेक एडमन लॉ, 4:30 to 6:30 आई एम गोना टेक क्रिमिनल। ये मेरी लाइफ है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर तू रुतबा चाहता है, मर्तबा चाहता है, पहले इतनी मेहनत कर, खाक में मिल जा, खाक में, जमीन के अंदर, दाना बीज जमीन के अंदर। एक दिन आएगा तू गुलो गुलजार बन जाएगा, दुनिया देखेगी, चंद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो ये कि फ्रस्ट्रेशन को ना कभी ना आंसर जवाब दो, आराम से हंसते हुए अगर आप तो कहते ना, मुझे, मैं, बड़े लोग बकवास करते हैं खानदान में, मैं आगे से कहता हूँ हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं। अब छोटी सी एक बात बता देता हूँ, थर्ड क्लास बात ही है। मेरा कजन, ही हैज डन PhD। एक दिन 5-6 साल पहले, यार आपको तो शादी की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा अच्छा जी, मतलब मैनू कह रहा है चले कि आप मर्द ही नहीं है। और मैं कहा हाँ हाँ हाँ, मैं कहा नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बहन, तूने उसका मुंह तोड़ के क्यों जवाब दिया? मैं कहा अगर उसने मुझे कुत्ता कहा तो मैं जवाब दूंगा तो मैं तो कुत्ता ही हो गया। मैं कहा वो जो मर्जी करता रहे। पॉइंट ये है कि नेवर एवर आंसर फ्रॉम द टंग, और जो बोलता है उसको बोलने दो। छोटा बंदा हमेशा, हमेशा छोटा बंदा बड़े के बारे में। हम कितना मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं, हम कितना इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, हर के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने तो नहीं कभी हमारे खिलाफ बोला। तो बड़ा वो बड़े वो लोग हुए कि हम लोग वो लोग। तो इसलिए जो छोटे बंदे आपके बारे में बातें करते नहीं, ये सोचा करो। और मैं पता क्या कहता हूँ, ऑनेस्टली, लास्ट वन थिंग, मैं पता क्या, मुझे बड़े लोग फोन करके कहते हैं आपके बारे में ये रिपोर्टें हैं, आपके बारे में वो रिपोर्टें हैं, ये है वो है, तेरे बारे में वो बात कर रहा है। मैं उसको, आप मुझे कहोगे ना यार वो आपके बारे में ये, मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसको को मुझे लिख के दे, वो लिख के दे, क्योंकि वो जो आप पे क्रिटिसाइज करते हैं ना, दे आर लॉयल टू यू, वो आपके रियल फ्रेंड होते हैं। आज तो वो आउट ऑफ जेलसी बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको रियल पॉइंट्स बता रहे होते हैं कि यार तेरे में ये खराबी है, तो आप उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दो। आई ट्रीट देम एज अनपेड एम्प्लॉय। मैं उनको अनपेड एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये कह रहा है, चाहे आउट ऑफ जेलसी कह रहा है, शायद मेरे में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्कआउट ऑन दैट प्रॉब्लम। ट्रीट देम एज अनपेड एम्प्लॉय। और जितना आप आंसर दोगे ना, तो अगले ने, और इग्नोरेंस इज अ बिग थिंग, इग्नोरेंस इज अ बिग थिंग। अगर पता चल जाए इस वक्त इस टेबल के नीचे एडा बड़ा फनीर सप है, किस तरह दौड़ा लगन गया, लगेंगे ना। इग्नोरेंस, अगर मुझे पता चल जाए 5 फुट का सप आया, मैं पूरा साल इस बिल्डिंग में ही ना हूं, एना मेनू सप तो डर लगता है। इग्नोरेंस। तो इसी तरह इग्नोर करो लाइफ में छोटी छोटी बातें, अगर आपने स्टार बनना है। हर वक्त अपने बारे में सोचो, हाउ टू इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ टू इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ टू इंप्रूव माई सेल्फ। सी यू 1:30 नेक्स्ट सैटरडे, वी कैन सॉल्व थोड़ा सा। डिड यू रियली एंजॉय? Yes, sir. Yes. हाँ, और किसी बात का बुरा ना मनाना यार, यू पीपल आर रियल, इन रियलिटी यू पीपल आर माई चिल्ड्रन। अब ये देखिए बच्चा कितना अच्छा बच्चा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और नमस्ते ही कहना है कि क्या कहना है? हेलो। नमस्कार, नमस्कार क्या, सत श्री अकाल या सलाम या आदाब क्या कहते हैं? ये हेलो हैं ही निधि? कहते हैं। ये हेलो ही अच्छा कहते हैं। चलो, और मैं, मेरे में सारी क्वालिटीज हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू बहुत सर। प्रीटी, बहुत हैंडसम बच्चा है। आई लव थैंक यू, अंकल सही आई लग लव यू। ये देखो सर आपको थैंक एक ट्रिक दिखाऊं, ये देखो ट्रिक देखो। यू। हम ये नहीं। देखो, ये देखो, ये ट्रिक ट्रिक। सी, It's a fun, yeah. नहीं। फनी है ना? ये देखो,
ये ये देखो, ए कैसे फनी, ये देखो, ये है ना, ये देखो, सी फनी। He's saying कितना crazy है. आपको सिखाऊंगा फिर, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आपको सिखाएंगे। आई लव यू माय डियर सन। ठीक है, चले जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना? अच्छा, डिड यू रियली एंजॉय? Yes. आशना, केवी, अनुराधा, क्रिस्टोफर, पिंटो, अभिजोत कौर, पीयूष भाई, डिड यू रियली एंजॉय? Yes, sir. Yeah. बस, Thank you, sir. बस Thank यार। you. हाँ तो ठीक है यार, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, नाइट, एक डार्क नाइट है, तो बड़ी जल्दी हम इसके कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो ये कि आपने ना आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, कछुए की तरह भागो। साल का कोर्स 2 सालों में कर लो, पर कर लो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, आई गिव यू वन एग्जांपल, वन एग्जांपल। यू हैव डन ग्रेड 5, आप अब बंद कर दें प्लीज माइक। यू हैव डन ग्रेड 5, 10, 12, ग्रेजुएशन, LLB। ओके, आपने इतना लंबा एक केक बनाया है, केक। अब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, निधि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, केक 100 केक्स पड़े हुए हैं, 100 केक्स विदाउट क्रीम, 1 केक है विद क्रीम। 100 केक्स विदाउट क्रीम, 1 केक विद क्रीम। 100 लोग हैं केक खरीदने के लिए, वो कौन सा केक की तरफ भागेंगे? 100 के 100? Of course, ऑफ कोर्स with cream. विद क्रीम। आप लोगों की यही वैल्यू है, आप लोग विदाउट क्रीम है, क्योंकि आपने NCA बैरिस्टर सॉलिसिटर नहीं किया। आज आप अपनी जॉबों को, आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं, तो इतना लंबा बड़ा केक बनाने का फायदा क्या था? ग्रेड 5, ग्रेड 10, FA, BA, LLB, इतनी मेहनत, 22 साल जिंदगी के आपने बनाए, अब क्रीम डालने की बारी आ गई है तो गिव अप कर रहे हो। दैट्स एक्चुअली बैड थिंग। उस क्रीम के बाद आपका फ्यूचर भी सेफ होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी चेक करो, प्रोपोर्शनैलिटी, व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी? प्रोपोर्शनैलिटी मीन, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? प्रोपोर्शनैलिटी मैक्सिमम 2 years वर्सेस योर प्रीवियस लाइफ एंड योर फ्यूचर लाइफ। ये 2 years क्या है? क्रीम। मैक्सिमम आप 2 years में बैरिस्टर सॉलिसिटर बन जाओ, ना बनो 1 साल में, 3 साल में बन जाओ, 4 सालों में बन जाओ। मैंने NCA पता कितने सालों में किया था? 6 सालों में, और आज भी NCA हूं। जस्ट लुक एट, आज उस NCA की बेस पे मेरा पूरा पूरा एक अंपायर खड़ा है, 100 वकीलों को ना जेब में डाल के वैसे ही बेच के खा। सर NCA 5 year की नहीं है? और फिर एक्सटेंशन मिल जाती है। हाँ. तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट यह है कि आप 1 साल का मैंने आपको बैलेंस दिया, 600 आवर्स इन NCA, 600 आवर्स इन बैरिस्टर सॉलिसिटर, 1 year। तो आप 2 years में कर दें, 3 years में कर दें, पार्ट टाइम 4 years में कर दें। 4 years वर्सेस होल योर प्रीवियस लाइफ एंड होल योर फ्यूचर लाइफ। प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आप 2-3 साल स्पेंड कर लेते हैं तो उसके बदले आपकी पूरा प्रीवियस लाइफ सफल हो गई और फ्यूचर भी सेफ हो गया, जनरेशन टू जनरेशन आपकी सेफ हो गई। गो फॉर प्रोपोर्शनैलिटी किसी भी तरीके से। अपने ना, आप अपने वर्क हार्ड टुडे फॉर द टुमारो, बट डोंट सेक्रीफाइस टुडे फॉर द टुमारो। आप 1 साल में नहीं कर सकते यार, 25 घंटे वीक के नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम, 12 घंटे दे दें वीक के, तो कितना अरसा हो गया? 2 साल। मैं बहुत ज्यादा भी आपको बता रहा हूं। द पॉइंट है, आपने उस क्रीम लगानी ही लगानी है, वरना होल प्रीवियस लाइफ इज गॉन, होल फ्यूचर इज आल्सो गॉन। तो बेटर ये है कि 1-2 साल पार्ट टाइम स्टडी है। एक दफा फेल होंगे, दूसरी दफा होंगे, दूसरी दफा फेल होंगे, तीसरी दफा होंगे, तीसरी दफा फेल होंगे, चौथी दफा। साल में 4 एग्जाम होते हैं, देंदे जाओ, कदी ना कदी तो पास हो ही जावांगे। ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल। थैंक यू।